लास्ट क्लास में हम लोग ने रैंडम फॉरेस्ट देखा था. रैंडम फॉरेस्ट वाज व्हाट कि you have some decision tree, you have some number of decision tree and you train your data set on that decision tree. अब हर एक डिसीजन ट्री एक पर्टिकुलर आउटपुट जनरेट करके देगा. अब वो रिग्रेशन का हो सकता है, वो क्लासिफिकेशन का हो सकता है. हम लास्ट में क्या करते थे, जो भी हमें अलग अलग डिसीजन ट्री से हमारा आउटपुट निकला, हम सबको एग्रीगेट कर देते थे. अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो देखते थे कि किस क्लास को कितना ज्यादा आउटपुट मिला है. फॉर एग्जांपल, लेट्स से देयर आर 100 डिसीजन ट्री, 70 of them are saying that whatever data set you have given, it belongs to class 1, and 30 of them are saying ki it belongs to class 0. So clearly the majority is with class 1, so the output would be class 1. अगर हम रिग्रेशन का बात करें तो हर एक डिसीजन ट्री would give you some kind of numerical data, right? अगर 100 डिसीजन ट्री है तो 100 के करस्पॉन्डिंग कुछ 100 वैल्यूज आएंगी मेरे को. क्योंकि हम रिग्रेशन का बात करें, there would be some numerical values associated with it. So हम क्या करते थे, हम सबका एवरेज ले लेते. तो दिस वाज व्हाट योर रैंडम फॉरेस्ट वाज. More or less all of them can be summarized or can be clubbed in some kind of geometrical approach. How we देखेंगे, let's see what all we're gonna cover in today's session. बहुत सारा topic है. We'll see what is this naive Bayes classifier is. We'll see the probabilistic approach to classification. Then we'll ask ourselves this question, like there is this term naive in this classification term. So why it is called naive? We'll deal with zero probability. We'll see how do we deal with probability of a continuous valued function. We'll dive a bit into the text classification. We'll build some mathematics and then we'll head on to the implementation part. So just tell me if it is visible, if my notebook is visible. Let me just a second. Yes, just a second. Is it visible now? Is it visible? Yeah, it is visible. Perfect. So let us start with today's session on naive Bayes classifier. See, अभी तक हम लोग ने क्या देखा कि whatever classification we were dealing, जो भी हम classification deal कर रहे थे, if this is your axis, this is your x-axis, this is your y, or let us say this is some, let me take it for some other case. This is your x1 feature, if this is your x2 feature, and let's say these are your points. If these were your points, right? These were your points. So हम कर क्या रहे थे, हम जनरली एक डिसीजन बाउंड्री बना रहे थे, समथिंग लाइक दिस. दिस वाज आवर डिसीजन बाउंड्री. हमने कहा कि इस डिसीजन बाउंड्री के राइट हैंड साइड में जो भी डेटा पॉइंट होंगे, दिस विल बिलोंग टू दिस क्लास सर्कल, एंड व्हाटएवर वैल्यू विल रिसाइड लेफ्ट टू इट, इट विल बिलोंग टू दिस क्लास ऑफ क्रॉस. ठीक है, ठीक है. यश, नंदिनी, कनिष्का, हमने जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने डिस्कस किया था कि हम एक टाइप का डिसीजन बाउंड्री बनाएंगे. दिस इज योर डिसीजन बाउंड्री. दिस इज योर डिसीजन बाउंड्री. So whatever value you may have some value, let's say this point. So you would check whether this point lies right hand side of this decision boundary or left hand side to this decision boundary. So you can clearly see it lies right hand side. So you may say this point will belong to this class circle. ठीक है. अगर यही point मैं कहीं यहाँ लेता, just a second, यहाँ लेता, so you can clearly see this point lies left of this decision boundary. So it clearly belongs to this class of cross. But this was the geometric approach. This was your geometric approach. Now we will dive how do we classify things based on probabilities.
because हम लोग ने देखा कि somehow down the lane whenever we are dealing with geometrical approach error are there, कुछ error crept हो जा रहा था. Error इसमें भी होगा, but this is something which is very useful for different type of problem. Like if you are using let's say logistic regression, अगर तुम्हारे पास कोई binary classification problem है, you want to classify how to draw a decision. Raj, this is something which is mathematical, purely mathematical. ठीक है, वो मैथमेटिक्स में यहाँ पे नहीं डिस्कस कर सकता. Because whenever we are dealing with, for example, like जैसे मैंने classification में I would suggest you to see my logistic regression video. उसमें मैंने बताया था कि for example, let's say these are your points, something like this. You have to make this line. This is a line. इसका equation कुछ होगा ax plus by plus c is equals to 0. ठीक है, something like this. This is what we have to calculate. ये मैंने logistic regression में cover किया हुआ है, तो kindly watch that lecture. अभी तो ये 2D में है, but if you are dealing with a lot of features, you will have to make some hyperplane. You would be making some kind of hyperplane. तो वो part अभी मैं इस सेशन में डिस्कस करूंगा. So now the first question arises कि जैसे logistic regression was used in some kind of binary classification, why do we even use this naive Bayes classifier? Like, what is its aim? Why do we even use it? Like, कोई भी तुम methodology सीखोगे, technique सीखोगे, तो the very first question arises कि why do we even use it? क्या जरूरत है इसको यूज करने का? और अगर हमको ये पता लग जाए क्या जरूरत है, तब हमको ये जानना होगा कि हम उसको कब यूज करेंगे. So in general, you may use it in any classification problem. You may use it in any of the classification problem. अब चाहे वो binary classification हो, multinomial classification हो, does not matter. हम देखेंगे कैसे. But सबसे पहले if I could use this term, we are using this term, just a second. So we have this term, look at this keyword, naive Bayes. ठीक है? In this keyword, you have naive here and Bayes here. First, discuss what this Bayes is. If you could recall, there is something which is known as Bayes theorem. Remember from probability? Bayes theorem. Raj, Kanishka, Yash, Bayes theorem. राज नहीं पढ़ा, चलो कोई बात मैं डिस्कस करता हूँ. So first see what this Bayes theorem is. So before diving to Bayes theorem, let us see how do we represent a few things. ऐसे समझो, सबसे पहले ऐसे समझो, let us say you have a bowl. इस bowl में you have 1, 2, 3 triangles and 2 circles. In this bowl, you have 3 triangles and 2 circles. So if I pick a figure
what is the probability that it would be a triangle? If I pick out a figure out of this bowl, what is the probability that it would be a triangle? So it can clearly be 3 by 5. Raj, Yash, Nandini. The probability is 3 by 5. Okay. Okay. So once I have taken out this triangle, so I'm left with only 4 figures now, right? Right? Give me a thumbs up if you are understanding. अब जब मैंने triangle निकाल दिया यहाँ से, तो we are only left with these 4 figures. So now, what is the probability that it would be a triangle if a triangle is taken out? So you may see it would be 2 by 4 or 1 by 2, right? Yash, Nandini, are you getting what I'm saying? So you may see the outcome of this event was dependent on this event. अगर ये event नहीं हुआ होता तो ये event का जो probability है वो ये नहीं रहता, right? Yash, Nandini, are you getting what I'm saying? अगर मैंने ये event किया ही नहीं होता तो मेरा ये 1/2 probability होता ही नहीं. You may say something like this कि अगर एक coin है, it would be either head or it would be either tail, right? Probability of coming a head is 1/2. Probability of coming a tail is 1/2. Considering it is an unbiased coin, so अगर पहले अगर head भी आ जाए तब भी उसके बाद में probability of getting a tail is 1/2 only, right? चाहे कितना बार head आ जाए, the probability of getting a tail would be 1/2 only, right? यश, कनिष्का, चाहे कितना बार तुम टॉस कर लो, पीछे तुम्हारा कितना बार हेड आ जाए, ultimately the probability of getting a tail would remain 1/2. So these are, so when your outcomes are dependent on some previous occurrence of some event, these are known as conditional probability. This is a classic example of conditional probability. Conditional probability. BI, just a second. There is some kind of condition associated. This is the condition. अगर वो triangle नहीं निकाला होता मैंने, so the probability would be something else. The probability would remain something else. Okay. So how do we represent it? Let us say the probability of getting a triangle, then you have this slash and then you write given the previous one is a triangle. So this was 1/2. Or if you have some sequence of events, something like, if you have some sequence of event, let us say कि पहले event A हुआ, event A के बाद B हुआ, पहले event A हुआ उसके बाद एक event B हुआ, तो you can write the probability of getting B given that A has occurred. This is how you represent it. ठीक है? This is how we represent it. अब आते हैं, what is this bias theorem? According to bias theorem, bias theorem is, bias theorem says something as if we want to calculate this probability, if we have to calculate this probability of occurrence of B given that A has occurred. So if you want to calculate it, the probability of B given that A has occurred, so it is given by this formula.
It is given by probability of occurrence of B into probability of occurrence of A given that B has occurred and divided by probability of A. This is what bias theorem is. ये पूरा पूरा थ्योरम ही है, ऐसा हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते. अभी मैं इसको प्रूव कर, चलो मैं प्रूव भी कर देता हूँ इसको, इजी हो जाएगा. Let me prove it. This is what bias theorem is. Let me prove it. Let us see its proof. बहुत मजा आएगा आज की क्लास में. बहुत इजी है, देखो. It is a general intuition. ये अपने intuition build करो. The probability of this thing would be equal to probability of this thing. अगर एक इवेंट A से B हुआ तो अगर B का प्रोबेबिलिटी निकालना है, सो इट वुड बी सेम एज अगर B पहले होता और A बाद में होता. तुम यहां पे चेक करो, तुम यहां पे चेक करो. तुम अगर पहले एक ट्रायंगल निकाल दिए रहते, या फिर अगर मैं सर्कल का बात करूं, तुम एक पहले सर्कल हटा दिए रहते, देन स्टिल द प्रोबेबिलिटी विल रिमेन सेम, राइट? यश, राज, सो इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन कि तुम ऑर्डर चेंज कर सकते हो, द प्रोबेबिलिटी विल रिमेन सेम. ठीक है, तो लेट अस कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर दिस इवेंट. Let us calculate the probability for this event. If this happens, you may say the probability would be first you probability of A times probability of, because पहले ये event हुआ फिर इसका conditional probability हम निकाले. पहले event A अगर हुआ, then you have this. अब क्योंकि ये सब, हाँ, now let's do it for this only. So this is probability of B into probability of A given that B has occurred. ठीक है, अब you may see we have to find out this. So इसको इधर भेज दो, you may transfer it there. So your, therefore let me write it with red. Therefore your probability of occurrence of B given that A has occurred, it is equal to probability of B times probability of A given that B has occurred divided by probability of A. This is what your bias theorem is. ठीक है, इतना क्लियर है? आगे बढ़े, इतना क्लियर है, आगे बढ़े. चलो, अब हाउ डू वी एक्चुअली यूज इट, हम इसको यूज कैसे करते हैं उससे पहले ऐसे समझो कि whenever we are dealing with some kind of classification problem, हमारा डेटा सेट कुछ इस तरह से लगेगा. हमारा डेटा सेट तो, ये क्या कर दिया मैंने, हमारा डेटा सेट कुछ इस तरह से लगेगा. You have some input feature x1, x2, x3, something like this till your xn. These are all your input feature, right? You would have some class, let's say c1, c2, something like that. Okay, these are all your classes. ck, let me write it till ck. So how do we use actually naive bias? It can be given that, इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझते हैं हम, इसको कैसे यूज करते हैं कि what if these are all your features, if these are all your features, what is the probability that the particular value would lie to this class? देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं तुमको ये सब फीचर दे दूं तो what is the probability that अगर मैं कुछ ऐसे यहाँ R1 वैल्यू डालूं, R1 में if I have this R1 रो, ठीक है, अगर मैं तुमको ये सारे वैल्यूज दे दूं तो what is the probability that R1 will lie to this class C1? ठीक है, this is how we actually calculate. हमारा एम यही होता है कि हमको कुछ इनपुट फीचर्स दिए होते हैं, इनपुट देखना होता है कि हमारा जो एक्चुअल वैल्यू है वो किस क्लास में, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो C1 में लाई करता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो C2 में लाई करता है, एंड सो ऑन, व्हाटएवर आर योर नंबर ऑफ क्लासेस. अगर दो में वर्क कर रहे हो तो C1 एंड C2. इफ यू आर यूजिंग फॉर मल्टीपल, you may extend it to CK. You may actually extend it to CK. So if I use it, if I can actually write mathematically, our aim is this thing.
Our aim is find the probability that you have some outcome y. Y would be some class. Y would be, if I could make here, your y is all the set of these classes, C1, C2, something like CK. You may choose anyone. So your aim is to find out what is the probability that you have some certain given output, given that you have certain features which is something like x1, x2, x3, comma, till some xn. So what are the probability that given these are your input feature, what is the probability that it would lead to some output y? So if you may write it according to Bayes' theorem, it would simplify it into this: x1 comma x2 comma till xn divided by probability of x1 comma x2 comma till xn, if n are your number of input features. So this is what we have to calculate. This is what we are supposed to calculate. ठीक है? ठीक है? चल 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 अब एक्चुअली देखो होता ये है। अच्छा, मैं उस पार्ट को पहले बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले मैं कुछ और चीजें तुम लोगों को बताता हूँ कि हमारा एम क्या होता है। अब देखो, इससे हमको कुछ पर्टिकुलर आउटपुट निकल गया, राइट? हमको कुछ पर्टिकुलर आउटपुट निकल गया। ओके, चलो ये इस पे वर्क नहीं कर। So if we calculate it for some different classes, let us say this is your y1, this is your y2, this is your yk. ठीक है? So you may actually calculate this thing, that find the probability that your y is some, let's say yi, और क्योंकि मैंने c लिखा है तो चलो c पे वर्क करते हैं, कोई दिक्कत, ऐसा कोई वर्क नहीं है। It is some ci, given that you have some input feature x. This is what your aim is, right? राज, समझ में आ रहा है? यश, नंदिनी, कनिष्का, नहीं आ रहा तो just tell me, I'll repeat it. हमको ये कैलकुलेट करना है। अब ये कैलकुलेट करोगे तो if let's say your C1, if this probability for C1 is 0.2, for C2 is something like 0.3, for C5 it is 0.9, for C4 this is 0.7. इतने सारे probabilities मेरे को आई। अब how do I actually decide कि ये किस क्लास में belong करता है? तो naturally you may see कि जितना probability आया, जो सबसे maximum होगा, will choose that. different classes के लिए मैंने निकाल दिया, और जिसमें सबसे ज्यादा आ गया I'll calculate it, उसी को मैं assign कर दूंगा. So what our aim is, Kanishka, are you getting what I'm saying? थोड़ा समझ में आ रहा है? Give me a thumbs up if it is making sense. If not, just poke me up. So our aim is our aim is to do this. Our aim is to do this. You have to maximize this probability that your output belongs to some class Ci, given that you're given some input features. What is this x? X is all your input feature, x1, x2 dot xn, your input vector. Your goal is this, you have to maximize. अब जिसके लिए maximum value आ गया, जिसके लिए मैक्सिमम वैल्यू आ गया, वही क्लास हम अलॉट कर देंगे। ठीक है, हमने प्रोबेबिलिटी निकाला, कहाँ गया, किधर लिखा है? अच्छा, मैंने इरेज कर दिया, चलो कोई बात। मैंने अलग अलग क्लासेस के लिए प्रोबेबिलिटी निकाला। लेट्स से योर प्रोबेबिलिटी फॉर क्लास 1 गिव्स यू 0.2, C2 becomes 0.5, C3 is 0.3। तो अगर मेरे को चूज करना है कि ये इनपुट x जो भी फीचर आया है, you could see here
ये जो पूरा वैल्यू सिर्फ मिलेगा कुछ x1 x2 का वैल्यू मिलेगा, राइट? सॉरी, मेरे को कुछ इनपुट फीचर का वैल्यू मिलेगा तनिष्का, कुछ वैल्यू होगा ना यहाँ पे, कुछ वैल्यू होगा। इस वैल्यू से अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगी, देखो मैं उस पर आऊंगा, मैं बकायदा करके दिखाऊंगा। सो हमको लेट्स से ये प्रोबेबिलिटी मिला और वी आर ओनली डीलिंग विद 3 क्लास, तो वी कैन सी द मैक्सिमम इज दिस वैल्यू, this is your maximum value, maximum probability. So the output, your prediction would be that whatever value you have, it belongs to class C2. This is what we have to do. ठीक है? अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स तुम लोग को डिस्कस कर देता हूँ, कुछ टेक्निकल टर्म, जैसे like let me write it for, let us say you have this probability of getting a class C, given that you have some input feature. If you use Bayes theorem, this goes out to something like this. ठीक है, यही होता है। अब मैं इसमें कुछ तुम लोग को डिस्कस करना चाहता हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंट टर्म्स वी विल यूज। तो द डिनोमिनेटर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द इनपुट फीचर, दिस इज नोन एज, ओके लेट मी राइट इट लाइक दिस, ऐसे थोड़ा खिचड़ी बन जाएगा। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस x, द अकरेंस ऑफ योर इनपुट फीचर x, दिस इज नोन एज predictor prior probability. These are the predicted feature और ये हम पहले कैलकुलेट करते हैं, इसलिए प्रायर। ऐसे तुम याद रख सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं। You have this P of C here, if you could see, this P of C is known as class prior probability, ठीक है? And then you are left with this conditional probability, the probability of occurrence of X, given that it is of class C. So it is probability of X given that your class is C. This is known as likelihood. If you will read some books regarding naive Bayes classifier, or if you would refer to some online material, these are the general terms which we use. ठीक है? अब I want you all to recall this. इसको याद रखना, इस वाली इक्वेशन को, लेट अस इक्वेशन A, इसको रिकॉल रखना। अगर मैं अगर ऐसे बताऊं, आई गेस क्लास टू इंटरमीडिएट में 12th में ये तुम लोग ने पढ़ ही रखा होगा, दैट हाउ डू वी कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट अगर तुम लोग थोड़ा सा भी पढ़े होगे, याद होगा। सो इफ आई कैन राइट, इफ A and B are independent event, what do I mean by independent event? कि इवेंट A का आउटकम B को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, इवेंट B का आउटकम A को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। जैसे टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, राइट? टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, अब हेड आए पहले, टेल्स आए पहले, व्हाट डज इट मैटर? कुछ मैटर नहीं करता। दोज आर इंडिपेंडेंट। यू गेटिंग अ हेड और गेटिंग अ टेल इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट। सो लेट अस से the probability associated with A, event A is PA, and the probability associated with event B is PB. So अगर ये दोनों इवेंट साथ में होंगे, probability of A intersection B, what is the probability of A and B? हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, अगर A and B अकर करेंगे, तो this probability is basically the product of all these. याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा नंदिनी, क्लास 12th में? हाँ याद आ रहा है। ठीक है, उस टाइम तुम लोग सोच रहे कि भाई सर कहाँ काम है, क्यों पढ़ाया जा रहा है। नाउ यू विल सी कहाँ काम है, कैसे यूज हो रहा है।
हाँ एग्जैक्टली उसने टेम्परेरी बढ़ा दिया थोड़ा। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. So this is an assumption कि अगर A और अगर A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है तो द प्रोबेबिलिटी कैन बी डिकम्पोज इनटू द प्रोडक्ट फॉर्म. इसका उल्टा भी हो सकता है कि if you are getting a probability like this, so you may say that A and B are your independent event. Converse भी हो सकता है इसका. So the question now you may ask a very good question कि आपने आपने बायस नहीं बायस में बायस वाला टर्म तो डिस्कस कर लिया कि we'll deal with Bayesian probability. What is naive here? Yes, एक बार गूगल में सर्च करो what this term is. NAIV, naive. What does this mean? And just copy down the meaning. Let me tell you actually यहाँ पे. यस तुम ये करो तब तक मैं बताता हूँ what is naive here. भोला, हाँ kind of भोला, kind of हाँ. So whenever we are dealing with naive Bayes classifier, you have to make an assumption, you have to make an inherent assumption that the features, let's say these are your features xi, these features are independent of each other. These features are independent of one other for some class C. मैंने क्या बोला कि let assume that measurement feature of one are equally, हाँ exactly, they're independent of each other. ठीक है, बेसिकली इसका मतलब यही है that let's say मेरे में कुछ और आ गया. अरे नाइव जो हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं लाइक दिस चाइल्ड इज वेरी नाइव, समथिंग लाइक दैट. The features are independent of each other. This is a very important term. Let us say you have given some input features x1, x2, x3, something like this till xn. You have your different class of output y. Okay, c1, c2, something like that. So what it is saying कि these all features are independent of each other. कोई feature किसी पर dependent नहीं है. This is the inherent assumption you work with. So if you could combine this term and this term and use it in this equation, if your x1, x2, x3 are independent, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ actually. Let me write it here. ठीक है. What I'm saying that the probability of occurrence of y, given that you have some input feature x1, x2 till xn, this was something as probability of y times probability of x1, x2, xn, given that it is of y class, divided by probability of x1, x2, x3, so on till xn. So if your different xi's, if your xi's, xi, if these are independent, so can I write this probability of x1, x2, something like that, xn, it can be written as probability of x1 times probability of x2 times probability of x3 product form. It can be written like this. It can be written like this. And if we use it here, your equation decomposes to something very unusual, rather interesting, I would like to say. It decomposes to this thing, probability of y, let's say you have x1, x2 dot something like xn. It decomposes to something like probability of y
probability of x1 given that it is of y class, probability of x2 given that it is of y class, something like this, probability of xn given that it is of y class, divided by probability of x1, probability of x2, probability of xn. This is what essentially you have to calculate for different features. अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा, बकायदा मैं एग्जांपल कराऊंगा, डोंट वरी. सो अगर मैं इसको, सिंस यू आर ऑल इन ग्रेजुएशन, I would use this notation. I would use this notation. Something like, if you have some probability for some class x, given that it is for, if you have to calculate the probability for your input x vector, right? Input x vector for your class y, this can be written as the product of all the probability of xi to see, where this product function varies from 1 till n. I guess ये symbol याद है सबको, product लिए use होता है. Like this is used for product, this is used for summation. ये तो पता ही होगा, नंदनी राज. चलो, so ये जितना इधर term मैंने लिखा है, ये जो इतना term मैंने लिखा है, this is what this is. So you may write this equation. You may write this equation as something as probability of y given that you have some x1, x2 till xn. This essentially decomposes to I is equals to 1 till n, probability of xi divided by y, probability of different xi's where I is equals to 1 till n, and you multiply this whole thing with probability of y. Am I correct? मैंने बस उसको इस नोटेशन में लिख दिया. As simple as that. कुछ इसमें तामझाम की बस. अब क्योंकि कोई तुम बुक रेफर करोगे या कोई ऑनलाइन मटेरियल जो स्टैंडर्ड मटेरियल है, ये सब लाइक इंट्रोडक्टरी वाला नहीं, स्टैंडर्ड मटेरियल में यही सब नोटेशन यूज होता है. सो अगर अगर like in some book you will also find something like this. What is the probability that your output is some xi, sorry, your input is some xi and your y is some class ci. इसको अगर तुमको इंग्लिश में लिखना हो तो it would be something like this. You have to find the count of, your x is equals to xi and y is equals to ci, and you divide it by the count of, you divide it by this, your out y is this ci. अब अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा बकायदा, we'll see there. ठीक है, we'll see for that part. Let me use this data set. ये क्लियर हुआ कि this is how we write it in notation. जैसे याद करो हम लोग सेट थ्योरी में कैसे लिखते थे, if you have some a intersection b, तो this is can be written as a and b. If you have a union b, this can be written as a or b, something like this. So that is how we also do it here. If you have this probability outcome of class C1 and your input vector xi, तुमको ये probability निकालना है कि a particular output is this xi, input is your xi, given that this is the output. So we'll use this formula. अब मैं एक example कराना चाहूंगा. I have this data set with me, very interesting data set. You may see it is known as plate tennis data set. Let me it है. ये visible है. This is your data set that you have some 14 days. You have this feature outlook. Outlook could be your sunny, your overcast or rain. यही तीन है. हाँ. You have this temperature which is hot, mild, cool. यही तीन है.
You have this humidity, high, normal. You have this wind, high, strong or weak, and then you have to predict this. So essentially, these are all your x and this is what your y is. ये पूरा हमें predict करना है. And these are all your input features. Outlook, temperature, humidity and wind. ये clear है? ये clear है? Raj, Kanishka. This is what your y is. You have to predict whether the person will play tennis based on these or four features. Okay. Now let us calculate. चलो देखते हैं सबसे पहले आउटलुक को देखते हैं. Outlook is either sunny or it is overcast or it is rain. यही तीन है आउटलुक के लिए. Yes. हर एक आउटलुक के corresponding you can see when the person would either play or not. So the person would either play yes or the person would not play. Let us calculate कि अगर सनी मेरा आउटलुक है तो कितना बार ये पर्सन खेला है. So if I have this sunny, no, 1, 2. So the person has actually played 2 times given that it was leading to you will play tennis. देखो अगर यहाँ देखो this is 1. एक बार और कहाँ है ये रहा. क्लियर है? क्लियर है? Let us see how many times this person has not played given that it was sunny. 1, 2, 3. So it is essentially 3. Let us see for overcast. So let us see for overcast. कितना बार overcast होते हुए भी this person has actually played the game. So overcast, yes, 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 yes. चारों बार this person has played and no 0. Let us see for rain. अगर rain है तो 1, 2, 3. So this person has played 3 times if it has rained and 2 times if it has not rained. ठीक है? ठीक है? Now let us calculate the probability. So what you have to calculate, let us find the probability of getting a yes. Let us do a sum of getting 2 plus 4 6 or 3 9, 3 plus 2 5 and this 14. ठीक है? Let us see what is the probability of getting a yes given that it is sunny. Let us see what is the probability of getting a yes given that it is sunny. So you may see the probability is 2 out of 9. This is 2 by 9. The probability is 2 by 9 because for all yes, देखो ये actually value क्या है? This is actually sunny given that it is a yes. This is what we are calculating. If you do it for overcast, this is 4 by 9. This is 3 by 9. Let me actually push this data set somewhere here. Now let us calculate for probability of getting, oops, sorry. This is not for sunny. This is for yes. My fault. इसमें ये 2 by 9 is the probability of getting a sunny weather if it is yes. Probability of yes, probability of no. Sure. Let us calculate what is the probability of getting a no here. So the probability is very simple. 3 out of 5. 3 by 5 is the probability. Let me write it with some other. 3 by 5. You may see the probability is 0. You may see the probability is 2 by 5.
So if I'm talking very specific about this, this can be written as probability of getting a sunny weather, a sunny outlook, given that your outcome is yes. This is what it means. Okay, this is what it means. Let us do it for some other feature, temperature. Let me do it for temperature. So your temperature was hot, it was mild, and it was cold. Let us see whether the person will play or the person will not play. We'll calculate the probability of yes. We'll calculate the probability of getting a no. Chalo. Let us see how many times it is hot and the person has actually went out and played the game. If I could see, no, 1, 2. So the person has not. So this is 2 times yes when the person has actually went. And if I could see from the data set, this person has 1 or 2. 2 times this person has actually not went. So if I do it for mild, let me do it for mild. Mild is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So mild is 1, 2, 3. And one more 4. 4 times it is yes. And 1, 2. 2 times it is no. It is 4, 2. Let us do it for cold. So cold is something. Let me just a second. Okay, so let us do it for cold. 1, 2, 3. So this is 3 yes and 1 no. 3 yes and 1 no. So this is 3 yes and 1 no. Now let's calculate the probability. So 3 to 6, 3, 9, 2 to 4, 1, 5. What is the probability? What is the probability that you get a yes for hot? The probability is 2 by 9. What is the probability that it is a yes given that it is mild? So it is 4 by 9. What is the probability it is cold given that it is a yes? It is 3 by 9. Let us do it for no. Probability is 2 by 5. The probability is 2 by 5 again, and the probability is 1 by 5. ठीक है? Let us do it for the outcomes. अब हमें outcomes के लिए भी करना है, तो outcomes के लिए how many times it is yes and how many times it is no. उसके लिए भी कर लेते हैं. आओ चलो यहाँ पे करते हैं. You play tennis. This is a feature. It is either yes or it is no. So let us see कौन कितने बार आया है. Yes would be somewhere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So it is 9 times yes and 5 times it would be no because total 14 है हमारे पास. ठीक है. Now let us calculate the probability. Now let us calculate the probability that it is a yes and let us calculate the probability that it is a no. ठीक है. So it is 14. The probability of getting a yes is 9 by 14 and the probability of getting a no it is 5 by 14. Make sense? इतना आया सबको clear? Yash, Nandini, Kanishka. ठीक है? Perfect. अब let us solve this problem. The problem is find the probability. हमारा aim, हमारा question किस तरह से हो सकता है, हमारा problem किस तरह से होता है.
So your problem would be something like, given that these are all my input feature, what is the probability that it would lead to your outcome, yes or no? हमारा ये हो सकता है कि अगर हम ये तुमको पकड़ा दे ये फीचर्स, तो हमको बस प्रेडिक्ट करना है कि वो पर्सन खेलने जाएगा या नहीं, राइट? यही हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है। तनिष्का, यश, नहीं समझ में आया यश? रुको मैं बताता हूँ। मैंने ये बोला कि अगर मैं ये डेटाबेस से तुमको ये बता दूं कि तुम्हारा आउटलुक क्या है, टेम्परेचर क्या है और ह्यूमिडिटी क्या है और विंड क्या है, अगर मैं ये फीचर्स तुम्हें पकड़ा दूं, so you have to come up with an answer whether that person will play the tennis or he will not play tennis. So mathematically, if I have to write it, mathematically what I have to calculate this. Find the probability that the person will play given that it is sunny and it is hot, something like this. हो सकता है ऐसा? हो सकता है? चलो, or we can also have something at probability of getting a no given that it is sunny or and hot. So what would be the probability for this outcome? अगर तुम if you could recall from Bayesian theorem, this would be something as probability of yes times probability of getting a sunny outlook given that it is a yes times probability of getting a hot temperature given that it is a yes, and you divide it by the product of probability of getting a sunny and probability of getting a hot. ठीक है? So it would be getting a probability of no, probability of sunny, getting a no, probability of getting hot outlook given that it is no. See, whenever we are dealing, जब भी हम देखेंगे ना तुम probability, so this term, the denominator is constant. चाहे तुम कुछ भी कर लो, this denominator is constant. ये सब में एग्जिस्ट करेगा, चाहे तुम yes लो, no लो, ठीक है? This denominator is pretty constant, तो हम इसको यूज नहीं करते क्योंकि और हमारा कंप्यूटेशन ऐड हो जा रहा है. But still, you may see your probability is dependent on this thing. ये सब में अगर कांस्टेंट है तुम उसको इग्नोर भी कर दोगे तब भी your probability is directly proportional to your numerator. बिकॉज हमको फिर ये अलग से तुम करना चाहो तुम कर सकते हो, तो प्रोबेबिलिटी से कुछ असर नहीं पड़ेगा उससे. तो प्रोबेबिलिटी वैल्यू चेंज हो सकती है, आउटकम चेंज नहीं हो सकता है. ठीक है, इसलिए यहाँ डिनोमिनेटर मैंने हटा दिया है. सो यू मे राइट समथिंग लाइक इट इज प्रपोर्शनल टू दिस वैल्यू. नाउ लेट अस डू इट फॉर फर्स्ट. Let us do it for our first. Let us predict that given that your outlook is sunny and your weather is hot, what is the probability that the person will actually go on and play the game? So this is proportional to what is the probability of getting a yes? The probability of getting a yes is what? Probability of getting a yes is 9 by 14, right? So this is proportional to 9 by 14. Into what is the probability of getting a sunny given that it is a yes? So we'll go on here. So this is the probability 2 by 9. What is the probability of getting a temperature as hot given that it is yes? So it is 2 by 9. If you calculate it, this comes somewhere down the line of 0.031. इसके इक्वल आएगा. Let us do it for probability of getting a no. Probability of getting a no given that it is sunny and hot. This is proportional to probability of getting a no times probability of getting a sunny weather given that it is no times probability of getting a hot temperature given that it is
no. So let us calculate. This comes to be what is the probability of getting a no. If you could see here, it is 5 by 14. We'll use it. 5 by 14 times probability of getting a sunny, given that it would lead to no. It is this value, 3 by 15. So we'll have this 3 by 15 into what is the probability of getting a hot, given that it is no. So it is 2 by 5. It is 2 by 5. So if we calculate it, 2 by 5. To calculate it, this is somewhere 0.085. 3 by 5. Kanishka, how is it 3 by 5? You have a hot 2, 5, so it comes out to be 2 by 5. So now, you can have a common observation that when you add these both, it will not lead to 1. When you will add these, it will not lead to 1. Add karo 1 nahi aayega, but we know either it is 1 or not. So the probability has to be 1. How can we make it 1? You can actually make it something. You can have this interesting, clever computation. It is 3 by 15. 3 by 15? Oh, my mistake. Probability of getting a sunny, given that it is no, it is 3 by 5. Oh, my mistake, sorry. Clear? Ye part? You have this 0.085. Now, if you would see, these does not add up to 1. How can we actually made it add to 1? You can have something as very interesting. This is known as clever computation. You can have this probability of getting a yes, given that it is sunny and it is hot. If you could recall ratio and proportion, I can have something as, I can actually write it in this way. 0.031, 0.031, and I divide it by the sum. I can do it for this also. Probability of getting a no, given that it is sunny and hot, I can do it as 0.085, 0.031 plus 0.085. Now if you could add both of them, it would give you 1, and this is what we want. So isko calculate karoge to this would be somewhere around 0.27. इसको calculate करोगे तो this would be around 80. कितना आएगा ये? This would be around 73%, यानी कि 0.73. If you want to calculate in percentage, take it. Now you may see which one is greater, this or this. Which one is greater? Kanishka, Yash, Nandini, which one is greater? 0.73. 0.73 is greater. So we can say, we can conclude this is greater, right? This is greater. So we can conclude something that if your outlook is sunny, if your temperature is hot, your outcome is the person will not play the tennis. This is how we deal with it. Clear है इतना part? Nandini, Kanishka, Yash? ये तो मैंने मैथमेटिक्स यहाँ पे किया है, ये मैंने मैथमेटिकल किया. हम जब प्रोग्राम लिखेंगे तो दो अप्रोच, या तो मॉडल यूज करो तो उसके साथ तुमको ये सब बिल्ट इन आता है. Otherwise you can actually write a function to do this. मैं मॉडल से बताऊंगा, बट मैं एक नोटबुक भेज दूंगा, मैंने एक बना रखा है प्रोग्राम. ठीक है, मैंने प्रोग्राम बना रखा है, तुम उसको देख के समझ सकते हो. So this was what that goes back of the hand of naive based classification. इतना पार्ट क्लियर है सबको? इतना पार्ट क्लियर है? चलो एक चीज और मैं डिस्कस करता हूँ.
जैसे मैंने बताया कि डिनोमिनेटर से हमको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बिकॉज इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट. It is constant throughout. So since we have this probability of getting your y as some ci, given that your x is some xj, so it was what? Your probability of y hat is equals to ci times your probability of x is equals to xj some class, given that your y hat is your ci divided by probability of xj. This is what your probability was in with reference to Bayesian theorem, Bayes theorem. So मैंने बोला कि you have to maximize this. What you have to do? You have to maximize this. What your aim was? You have to maximize this probability. Probability of, let's say, getting a CI given that your class is some xj. अब how do you actually maximize it? मैंने बोला कि you just drop this term. इसका उतना ज्यादा कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है. प्रोबेबिलिटी के नंबर में अंतर आ जाएगा बट ट्रेंड वुड नॉट चेंज, कि जो प्रोबेबिलिटी सबसे बड़ी होनी चाहिए थी वो सबसे बड़ी ही रहेगी, राइट? जैसे समथिंग लाइक दिस, if your probability is 0.4 and your probability is 0.6, if you still divide by a common number, it will 0.2, it will be 0.3, but the trend that this one was bigger does not change. अब ये हो रहा है कि एडिशनल तुमको ये 2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यस यू मे डू इट, बट क्यों करना चाहूंगा, ट्रेंड सेम ही रहेगा. हमको नंबर से थोड़ी मतलब है, हमको ये देखना कि बड़ा कौन सा वैल्यू है. सो यू मे से इफ यू वांट टू मैक्सिमाइज इट, you have to maximize this numerator. You have to maximize this numerator, right? So you may write, if you want to maximize it, what you have to do, you have to maximize this numerator, the probability of some ci, given that you have to maximize the numerator. ये हमारा एम होता है. यही तुमने देखा मैंने यहाँ पिक किया, कुछ जो मैक्सिमम वैल्यू आई उसको मैंने उठा के पिक कर लिया. दिस इज व्हाट लीड टू योर आउटपुट. सो आई गेस इतना पार्ट जो मैंने पढ़ा कराया, आई गेस दिस वाज प्रीटी क्लियर. It is pretty clear. So sometimes you may see कि obviously अब इसमें if I have to tell you, this value can never be zero. This value that you probability some outcome, this can never be zero. The only thing that can be zero here is this term. So if this is zero, the probability would be, the entire probability would be zero, right? अगर ये टर्म जीरो हो जाए तो पूरा प्रोबेबिलिटी जीरो का जीरो हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस. For example, something like this. Let us say you have a data of study hour, and based on the study hour, you have to predict whether the person will get a nice package, or you may have some CGPA here. ठीक है, ठीक है. Let us say your CGPA is high, average, or low. ठीक है. Let us अच्छा package. Let us say कि whether the person has been placed or not, because हम चेक करना चाहते हैं for classification whether the person has been placed or not. So if the package is high, you may say this is how your data set looks like. This is how your data looks like. This is what your training data is. ठीक है. Now just tell me, if I have to calculate this value, what is the probability that your CGPA was high
given that you have not been placed, if you could see from this training data, ऐसा तो कोई वैल्यू है ही नहीं मेरे पास. अगर हाई है तो बंदा प्लेस हुआ है, एवरेज है तो बंदा प्लेस नहीं हुआ है. So I can have a probability of 0. ऐसा तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो the probability is 0. अगर हम रियल लाइफ में देखें तो ऐसा हो सकता है कि किसी का सीजीपीए हाई हो तब भी उसका प्लेसमेंट नहीं लगा हो. ऐसा हो सकता है रियल वर्ल्ड में, ऐसा हो सकता है, राइट नंदिनी, यश? जस्ट टेल मी यस और नो इफ इट मे हैपन. हो सकता है. सो अगर मेरे को ऐसा कोई कंप्यूटेशन करना होता, अगर मेरे को कोई ऐसा कंप्यूटेशन करना होता जहां पे ये वैल्यू आ रही होती, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा प्रोबेबिलिटी है वो तो जीरो हो जाता. वो तो जीरो हो जाता. बट हम ऐसा चाहते नहीं है कि वो जीरो हो, बिकॉज रियल लाइफ में ऐसा वैल्यू हो सकता है. रियल लाइफ में ऐसा वैल्यू हो सकता है. देयर इज सम प्रोबेबिलिटी. इट मे नॉट बी जीरो, बट देयर इज सम इनहेरेंट प्रोबेबिलिटी that despite your high CGPA, you have not been placed, right? Right? Yes. So to deal with it, we have something. Let me discuss this topic. How do we deal? How to handle zero probability? हाउ टू हैंडल इसको ऐसे भी समझो. ऐसा भी हो सकता है कि किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा हो फिर भी वो बैंक का लोन नहीं चुका पाया हो. अगर तुम इस बेसिस पे लोन दे रहे होगे कि द पर्सन इज बिलोंगिंग टू हाई नेटवर्क इंडिविजुअल HNI, there is some chance that this person would not return me the loan. हो सकता है, हाँ बहुत हाई चांस है कि वो लोन दे दे, बट ऐसा भी तो प्रोबेबिलिटी है कि वो नहीं भी दे सकता है. जीरो तो प्रोबेबिलिटी है नहीं कि वो पर्सन नहीं देगा, राइट? रियल लाइफ में हम डील करते हैं तो हमारे पास ऐसा डेटा होता है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा है तब भी तुम लोन नहीं चुका पाए, समथिंग लाइक दैट. तो उसको भी तो हमको डील करना है टू गेट अ बेटर एक्यूरेसी. सो हाउ डू वी डील विद इट? देयर इज समथिंग नोन एज correction, or in some books it is known as Laplace smoothing, or in some book it is also known as additive smoothing. ये तीनों टर्म से इसको जाना जाता है. अब देखो होता क्या है, व्हाट यू डू, कि हम करते क्या है. So to answer what you have to do, जैसे यहाँ देखो, how should it, probability इसका कैसा होता? इसका probability कुछ ऐसा होता कि get me the count of high and no divided by count of ऐसा होता, कुछ ऐसा होता. oh sorry count of no नहीं, high count of no, ये होता है. if you could recall it from, यहाँ ऊपर मैंने कहीं पे बताया था ये फॉर्मूला, कहीं यहाँ ऊपर बताया था मैंने, मिल नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं. हाँ ये रहा, ठीक है. So this was essentially giving me 0. तो हम करते ये हैं कि इसमें कुछ ऐड कर देते हैं, न्यूमरेटर में. इफ यू ऐड समथिंग एज 1, अगर हम 1 ऐड करेंगे तो दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी एनीमोर, बट इससे हमारा आउटपुट बढ़ के अब 0 नहीं रहेगा, अब इट वुड बी समथिंग नॉट 0.
right? This will not be 0 because अगर इतना part से 0 आ रहा है तो इतना तो 0 रहेगा, but ये 1 over this count of no would give you something which is definitely not 0. So what we do essentially कि अगर हम सिर्फ 1 ऐड करेंगे तो this is not a probability anymore. So what you actually do, you divide it by number of features. Now it is a probability. Let me write it here. What देखो हम करते क्या है? You add a constant in numerator and denominator. देखो क्या हो रहा है? How? Let us see how. ठीक है, मान लो कि you have some feature xi. Let us say for some feature xi and कोई class होगा ck and some class ck. What was your initial probability? Let us see if I have to see what was without smoothing. अगर मैं smoothing नहीं करूं तो how does it looks like? So your probability was something as probability of x is equals to some xi given that your y is equals to ck. So to calculate this, it was what? It was count of x is equals to xi and y is equals to ck, and you divide it by count of y is equals to ck. यही था. This was initially what your formula was. Now what we actually do, oh, just a second. With smoothing. अब तुमने क्या किया कि we'll use the same formula that find the probability that your input is some xi given that your output is some class ck. I'll have this formula again, count of x is equals to xi and y is equals to ck divided by count of y is equals to ck. हम इसमें देखो क्या ऐड करते हैं, we'll add some alpha here and we'll add some alpha times n here. So now question arises what this alpha is. Alpha is known as smoothing parameter. It is usually taken as 1. बहुत सारे केस में तुम इसका वैल्यू 1 देखोगे. And what this n is number of features. Let's say if your data set was something like x1, x2, something like x5, so n is 5 here. ठीक है? N is 5 here. So if you would use it, your probability would not be 0 for whatever case you may take. It could be, however, very small but not 0. Okay? This is what Laplace smoothing means. You add this term alpha in the numerator and alpha times n in the denominator. So essentially this again becomes a probability. You have this alpha smoothing parameter, okay, where your alpha is your smoothing parameters का usually value हम 1 रखते हैं, and n is your number of feature or sometimes it is known as number of dimensions, something like that. You may whatever you may take. So ये part clear हो गया, आगे बढ़े. Now let us see what are the different types of naive Bayes classification. What are the types of naive Bayes classification?
अच्छा मैं ऐसे देखता हूँ, टाइप्स ऑफ naive bias. Now, if I have to talk about what are the different types of naive Bayes classification, so we'll start with very first, which is known as binomial, no, Bernoulli, sorry. Bernoulli naive Bayes. ठीक है, इसको हम यूज कब करते हैं? When do we use it? When do we use it? जब तुमको predict करना है कि whether it is 0 or 1. Whenever you have something binary feature. Whenever you have some binary feature. इसका formula, if I have to tell you, the formula is very interesting. It is something as, if you find the probability of getting an input x given that it belongs to some class C. So this is equals to a product of r is equals to 1 till n. Find the probability of xi given that it belongs to some C for some xi class into 1 minus probability of xi given that it belongs to some C and you multiply it by 1 by xi. This is, अगर तुमने बर्नौलीज प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा क्लास 12 में, नहीं पढ़ा तो एक बार चेक करना. This is what the formula is. जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, कहां यूज करते हैं. लेट अस से यू आर गिवन सम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट. एक डॉक्यूमेंट मैंने तुमको दिया, ठीक है, और मैं तुमसे पूछा कि इस डॉक्यूमेंट में चेक कि मेरा नाम आता है या नहीं. सो इट कैन बी ईदर आता होगा या नहीं आता होगा, बीच का कोई वैल्यू नहीं होता है, या तो डॉक्यूमेंट में नाम होगा या नहीं होगा. सो देयर वी कैन यूज दिस बर्नौलीज naive bias. The second one is which is known as Gaussian naive bias. ये बहुत ज्यादा यूज होता है, Gaussian naive bias. When do we use it? पहले आते हैं when do we even use it. Simply Gaussian curve मैंने बताया था, when your feature is something like this, it is continuous. So when your feature value is continuous, so when your feature you may have something like it, जैसे ऐसे समझो कि तुम्हारा मैं परसेंटेज ले लूं, आई हैव टू प्रेडिक्ट कि तुम्हारा प्लेसमेंट होगा या नहीं. So the value percentage is a continuous value. It can be 97.2, 97.3, 95, 85 something. 0 से लेके 100 के बीच में कोई भी वैल्यू वो अज्यूम कर सकता है, राइट? यश, नंदिनी, perfect. So the formula is very, ये मेरा kind of बहुत ज्यादा हम इसको यूज करेंगे. It is something as if to find the probability of xi given that you have some class ck, it is something 1 over root under 2 pi, pi कैसे लिख दिया मैं, 2 pi sigma of ck square e raised to the power minus of xi minus mu of ck whole square and you divide it by 2 sigma square ck. This is the formula. मैं बताता हूं कौन सी वैल्यू क्या है. Just give me a second. बहुत भयंकर सा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, but it is very easy. See what all things we have here.
You have this mu c. You can see you have this mu ck here. You have this mu ck. ठीक है, let me erase this. Let me erase this. Just a second. Oops, सब बढ़ गया क्या? Oh. चलो छोड़ो उसको. अच्छा ठीक. Let us see what this mu ck is. So your mu ck is it is simply the mean of features xi for your class ck. इस क्लास के लिए मेरा इनपुट जो फीचर xi होगा उसका मीन निकाल दो. And your sigma square ck, standard deviation, अगर थोड़ा सा याद आ रहा होगा statistics, so it is your standard deviation. स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ा है यश? 11th 12th में. हाँ सुना 11th में था. फिर फीचर xi for your class ck. This is what Gaussian naive biases. If I have to plot a graph, देखो इसमें इसका ग्राफ कैसे होता है. इसका कर्व कुछ इस तरह से वैरी करता है. अब बेल कर्व जिसमें ये जो वैल्यू है, देख रहे हो, इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहां लाई कर रहा है. If this is your number of values, if your number of data points, or you may have number of features here. So this is somehow the average. So you may see a very high number of feature would lie near its average. जब भी हमारा कोई ऐसा डेटा सेट हो जहां पे it is somehow distributed between its mean value, we can assume that it is a Gaussian distribution or normal distribution. So इसी बेसिस पे एक होता है मल्टीनोमियल नेव बायस. ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होता है. थर्ड इज मल्टीनोमियल नेव बायस. इसमें क्या होता है? 3. हमें 3 पढ़ना है बस. हमें बस ये लास्ट पढ़ना है. मल्टीनोमियल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग बिकॉज हम इसको यूज करेंगे एनएलपी में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. देखो हम इसको कब यूज करते हैं? व्हेन डू वी एक्चुअली यूज इट? देखो जब हमको दिया रहता है ना, तो हमको ये पता लगाना होता है कि ठीक है ये तीनों कब कौन सा यूज करना है. सो यू कैन हैव समथिंग जब हमारा डेटा डिस्क्रीट हो, or you may say when you will have multiple categories. When you have some multiple categories. ठीक है. or you will have whenever you will have multiple count, it should not be the 0 or 1. बहुत सारे values हो सकते हैं. If I have to give you some example, you may have an example of something like let us say कि एक डॉक्यूमेंट में एक पर्टिकुलर वर्ड कितने बार आया है. दैट इज अ काइंड ऑफ मल्टीनोमियल नेव बायस. इसका फॉर्मूला देखें. बिकॉज जैसे हम कभी कभी स्पैम फिल्टरिंग ये सब देखते हैं, तो स्पैम फिल्टरिंग वी कैन डू इट विद this multinomial also. We can do it with Bernoulli also, no issues. ठीक है. So if I have to tell you the formula is very interesting. Probability of xi some c, it is given as n times to c factorial. Just a second. Let me write it.
something as your NC factorial over x1 factorial, x2 factorial, something like xn factorial. Then your I is equals to 1 till n, probability of xi given that ci for some xi. This is the whole formula. मैं formula याद करने को नहीं बोल रहा, but you may see this is how it looks like. ठीक है? This is how it looks like. ये समझ में आया कि कौन फॉर्मूला याद करना जरूरी नहीं है, बट एसेंशियली यू आर गेटिंग कि कब हमको क्या यूज करना है. Whenever we have to deal with some discrete values which belong to some multiple category, we'll use this multinomial naive Bayes. Whenever we have some continuous value like height, weight, your house price, something like that, you can have this Gaussian naive Bayes. And whenever we have to deal with binary feature, like you may see something like, अगर मैं हाई और लो में सिर्फ यहाँ डील करता तो आई कैन यूज दिस बर्नूली हेयर. तो ये पार्ट आई एज्यूम कि क्लियर हो गया सबको. ये पार्ट क्लियर है. नाउ लेट अस सी समथिंग which is known as हाउ. ये तो हमने ये देखा कि हमने जो भी था नंबर्स के साथ डील किया. ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट नंबर्स. नाउ लेट अस सी हाउ डू वी वर्क विथ टेक्स्ट. हाउ डू वी वर्क विथ टेक्स्ट. How do we work with text classification in naive Bayes? इसको ऐसे एक assume करो. एक simple example लेता हूँ. Let me give two set of articles. Let me give you two set of article. This is your article 1. This is your article 2. ठीक है? You have these two articles and you have to predict whether this article is for sports or is it for news. क्या ये स्पोर्ट्स के से रिलेटेड आर्टिकल है या फिर न्यूज से रिलेटेड है. राइट. लेट अस से दिस इज आवर प्रॉब्लम कि मैं तुमको एक सेट ऑफ आर्टिकल पकड़ा दूं. कैन यू टेल मी वेदर इट बिलोंग्स टू द स्पोर्ट्स कैटेगरी और न्यूज कैटेगरी. सो हाउ डू वी डील विथ इट. जब इस तरह का प्रॉब्लम आता है ना, वी हैव सम डिफाइंड स्टेप्स. हमारे पास कुछ डिफाइंड स्टेप होते हैं जो हमको करना होता है. पहले एक बात समझो. एक सोच रहा मैं इंट्यूशन बिल्ड करता हूं. पहली बात, इस डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा होगा वो कुछ अल्फाबेट्स होगा, ए बी सी डी समथिंग, कुछ वर्ड्स होंगे. नंदिनी राइट? यस राइट. इस आर्टिकल में कुछ हिंदी इंग्लिश का कुछ वर्ड होगा ना. अब भाई डेफिनेशन मेरा कंप्यूटर तो नहीं समझ सकता है वो इंग्लिश वर्ड. कंप्यूटर को थोड़ी पता है. राइट. तो हमारा जो कंप्यूटर होगा वो क्या करेगा कि उसको कुछ ऐसे नंबर्स में ट्रांसफॉर्म कर देगा जो उस वर्ड को रिप्रेजेंट करता है. देखो मैं बताता क्या क्या स्टेप्स, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व. एक एक करके मैं स्टेप बताता हूँ, ज्यादा क्लियर होगा. So basically there are 4 steps which are involved in text classification. So पहले मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ. The first step is pre-processing. देखो क्या होता है. सबसे पहले प्री-प्रोसेसिंग में सबसे पहले हम टोकनाइजेशन करते हैं. What is tokenization is? जैसे ऐसे समझो कि अगर मैं एक आर्टिकल दिया रहूंगा तो देयर वुड बी सम सेंटेंसेस लाइक दिस. एक पूरा सेंटेंस होगा. राइट.
एक पूरा एक सेंटेंस होगा समथिंग लाइक दिस। अगर मैं ऊपर जो लिखा, अगर मैं यही ऊपर लिखा एक, मान लो दिस इज द आर्टिकल, दीज आर ऑल दी सेंटेंसेस जो इसमें है, दीज आर ऑल दी सेंटेंसेस इस आर्टिकल में। अब कंप्यूटर तो एक बार में ये पूरा चीज नहीं समझ पाएगा, तो कंप्यूटर क्या करेगा, इसको छोटा छोटा पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जैसे मल्टीनॉमियल इज वन वर्ड, योर एनवी इज वन वर्ड, योर डिस्क्रीट इज वन वर्ड, योर मल्टीपल इज वन वर्ड, योर कैटेगरीज इज वन वर्ड, योर काउंट इज वन वर्ड, योर व्हेन इज वन वर्ड. So the entire text is actually broken down into some tokens. These are all known as tokens. अगर Python का lecture याद आ रहा होगा तो we can say the smallest unit of a phrase or a sentence which you can actually understood is known as token. So what has happened is you are given some text and you are breaking it down into some kinds of word or token. हम sentence को तोड़ के छोटे छोटे words बना रहे हैं. Now next step is you do some kind of normalization. अब देखो normalization क्या होता है. अब जैसे यहीं पे मैं तुमको बताया, ये एक सेंटेंस देखो, इस सेंटेंस में कुछ कैपिटल लेटर्स है, कुछ स्मॉल लेटर्स है, कुछ कैपिटल लेटर्स है, कुछ स्मॉल लेटर्स है, कुछ स्मॉल लेटर्स है, कुछ कैपिटल लेटर्स, समथिंग लाइक दिस. है ऐसा? है ऐसा? यश? सो हम क्या करते हैं कि इस पूरे सेंटेंस से जितने भी अपर केसेस है सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं. और यू मे डू इट इसका उल्टा, यू मे डू इट इसका उल्टा. सो तुम सारे वर्ड्स को लिए उसको लोअर केस में कर दिए. सारे वर्ड्स जितने भी थे अपर केस मिला जुला के, कैमल केस कुछ भी हो सकता है, टॉगल केस, समथिंग लाइक दैट, तुम सबको लोअर केस कर दिए क्योंकि अब सब सिमिलर हो गए, सब यूनिफॉर्म हो गए. इससे हुआ क्या? इससे क्या हो गया? हमको यूनिफॉर्मिटी आ गया. You have attained uniformity. Now next thing which we would do is, जैसे यहां देखो, अगर हमको ये सेंटेंस समझना है कि ये लेट्स से कि ये मैथ्स का है ये सेंटेंस या ये फिजिक्स का सेंटेंस है, लेट अस से वी हैव टू कैटेगरीज, फिजिक्स एंड मैथ. सो इस पूरे में से हमको जो एक्चुअली देखना होगा, वी हैव टू सी दिस वर्ड एंड दिस वर्ड. ये विथ से हमको कुछ कंटेक्स्ट नहीं मिल रहा है. विथ से हम इस वर्ड को यूज करके वी कैन नॉट क्लासिफाई कि ये फिजिक्स का है, ये मैथ का है. इससे हमको कुछ सेंस नहीं मिल रहा है. ऐसे कोई अगर एक आर्टिकल होगा ए, एन और समथिंग लाइक दिस, उससे हमको ये तो पता नहीं लगा कि ये किस में लाई करता है, राइट? बट उस सेंटेंस में तो वो एग्जिस्ट करेगा. For example, let us have this example. A cricket player is scoring 100 runs. If this is your sentence, इस सेंटेंस में हम पता लगाना है कि ये सेंटेंस क्रिकेट के लिए है या फिजिक्स के लिए है. हमको ये क्रिकेट कीवर्ड पे देखना होगा, हमको ये प्लेयर देखना होगा, हमको ये स्कोरिंग देखना होगा, ये 100 देखना होगा, ये रन्स देखना होगा, राइट? बिकॉज इसके अलावा जो ये वर्ड है ए और ये इज, ये फिजिक्स वाले में भी अप्लाई हो जाएगा. समथिंग लाइक अ कार रनिंग with uniform speed. So you may see this keyword A, ये फिजिक्स वाले में भी आ रहा है और क्रिकेट वाले में भी आ रहा है. ये इज, ये विथ, ये कहीं भी आ सकता है. तो इसका हमको काम नहीं है समझने के लिए, इसका हमको काम नहीं है. हमको समझने के लिए सिर्फ इतना पार्ट से मतलब है, इतना पार्ट से. क्रिकेट हमको पता लगना चाहिए, प्लेयर पता लगना चाहिए, स्कोरिंग पता लगना चाहिए, 100 पता लगना चाहिए, रन्स पता लगना चाहिए. सो योर थर्ड स्टेप इज यू विल रिमूव ऑल सच वर्ड्स जिसका हमको काम नहीं है, जिसका कोई कंटेक्स्ट नहीं मिल रहा है. सो व्हाट वील डू इज, we'll
ड्रॉप स्टॉप वर्ड्स, ऐसे ऐसे वर्ड्स का कोई काम नहीं रहता, मैं उस दीज आर नोन एज ड्रॉप, दीज आर नोन एज स्टॉप वर्ड्स, इसका काम नहीं, विल ड्रॉप ऑल सच वर्ड्स. So whenever you do it, there is also something which is known as stemming. Stemming में क्या होता है, जैसे ऐसे समझो नंदनी, अगर एक कीवर्ड है रनिंग. अब रनिंग में, रनिंग का एसेंशियली मतलब होता है रन, राइट? रनिंग का मतलब होता है रन, बस इसका इसमें ये आईएनजी एक्स्ट्रा आ जा रहा है. सेंस तो वही है कि वो बंदा दौड़ रहा है, या जो भी है वो दौड़ रहा है, राइट? हम क्या करेंगे कि ये 3 वर्ड का हमको काम नहीं है, हम इसको ड्रॉप कर देंगे, हटाओ इसको. हमारा सेंस सिर्फ इतना ही रहना चाहिए, रन. रूट वर्ड, यस, हमको सिर्फ हमें बस रूट वर्ड निकालना है. वी वांट ओनली रूट वर्ड. So whatever you have some word, you will have its root. So this all step comes under pre-processing. Now what happens, जब तुम एक बार pre-processing कर लोगी तो you have to extract the features, which is known as feature extraction. ठीक है? अब देखो इसमें क्या होता है. अब तुमको अगर तुमको जानना हो कि let's say you have this cricket, you have this physics, you have this modulus, something like this, ऐसे. अगर ये 3 कीवर्ड है 2 डॉक्यूमेंट में, you have this document 1, you have this document 2. Let me write it here, document 1, document 2. Now you do it. तुम क्या करती हो कि तुम चेक करती हो कि ये कीवर्ड कितना बार आया है. लेट अस से ये कीवर्ड 70 टाइम्स आया है, ये 10 टाइम्स आया है, ये फीचर 20 टाइम्स आया है, ये 80 टाइम्स आया है, मॉडुलस 30 टाइम्स आया है, 50 टाइम्स आया है, दोनों डॉक्यूमेंट में. ये 3, अगर मैं 3 के लिए वर्क कर रहा हूं तो दिस इज नोन एज बैग ऑफ वर्ड, BOG. This is known as bag of word, a very important step in feature extraction. तुम क्या करते हो, हर एक कीवर्ड का फ्रीक्वेंसी देखते हो उस डॉक्यूमेंट में कितना आया है. बेसिकली तुम एक डिक्शनरी बनाते हो जिसमें हर एक वर्ड का कितना बार अकरेंस है वो तुम देखते हो, समथिंग लाइक दिस. ठीक है? दिस इज व्हाट योर बैग ऑफ वर्ड इज, बिकॉज हम इसी को यूज करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है वो किस कैटेगरी में लाई करता है. ठीक है? देन देयर इज समथिंग नोन एज TF-IDF, which stands for term frequency inverse document frequency. बेसिकली क्या है कि कुछ ऐसे कॉमन वर्ड होंगे जो दोनों में लाई करेंगे. जैसे अभी मैं थोड़ा पर एग्जांपल था, देयर वाज दिस मॉडुलस. अगर हमको कोई वर्ड से पता नहीं लग रहा है कि वो किधर के लिए लाई करेगा तो ऐसे वर्ड को मैं हटा दूंगा. व्हाट आई विल डू, आई विल एडजस्ट द फ्रीक्वेंसी, of the words. इससे हमारा एम क्या होता है, टू गिव लेस इंपॉर्टेंस. ऐसे वर्ड जो बहुत ज्यादा बार अपीयर कर चुके हैं उससे अगर हमको ज्यादा फायदा हो नहीं रहा है तो मैं ऐसे वर्ड की फ्रीक्वेंसी कम कर दूंगा. दिस इज नोन एज TF-IDF, which is term frequency inverse document frequency. ठीक है? अभी मैं क्या करूंगा कि मैं कल एक बोनस लेक्चर या कल एक सेशन ले लूंगा, विल बिल्ड अ प्रोजेक्ट कल ऑन स्पैम फिल्टरिंग, वहां पे हम ये देखेंगे. आज के सेशन में मैं इतना इसको डेप्थ में नहीं जाता हूं. सो दिस वाज ऑल योर फीचर एक्सट्रैक्शन. बैग ऑफ वर्ड तुमने बताया जहां पर हर एक वर्ड का काउंट देखा कि ये कितना बार आता है उस डॉक्यूमेंट में. देन यू हैव दिस
TF-IDF, जहां पे तुमने क्या किया, जो वर्ड बहुत ज्यादा बार आ चुका है जिससे कोई हमको सेंस नहीं मिल रहा है, उसका उस फ्रीक्वेंसी कम करके we'll actually see कि किस वर्ड से हमको ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है उस डॉक्यूमेंट का. Then there is something also known as n-gram. इसको हम लोग डेप्थ में डील करेंगे एनएलपी में. इससे क्या होता है कि ये क्या हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, ये क्या हो रहा है. Ouch. जस्ट सेकेंड, ये क्या हो गया, और कुछ टाइप हो गया. जस्ट अ सेकेंड. परफेक्ट. there's this n-gram, जिससे क्या होता है कि तुम उस सेंटेंस का कंटेक्स्ट ग्रास्प करते हो, that you capture the context. इसको हम लोग डेप्थ में उधर पढ़ेंगे एनएलपी में, बट एक आइडिया दे दूं कि व्हाट इज गोइंग ऑन. एंड व्हेन यू आर डन विद ऑल दिस स्टेप, तुम सिंपल क्या करते हो, you train to your naive bias classifier, and when you train it, then you actually give the classification. जिसका probability सबसे ज्यादा आया वो उस कैटेगरी में चला जाएगा. So this was all about the mathematical and all the other part other than your implementation. Now, तो हम लोग ने देखा था एक्चुअली कि इफ वी आर वर्किंग विद टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, टेक्स्ट को मेरे को क्लासिफाई करना है. ऐसे ही समझो कि मेरे पास दो आर्टिकल मैं लिखा हूं. लेट्स से आई हैव टू आर्टिकल्स. लेट मी एक्चुअली डू इट. लेट अस से आई हैव एन आर्टिकल. ठीक है, दिस इज माय आर्टिकल 1. आई हैव अनदर आर्टिकल. डॉक्यूमेंट भी हो सकता है. ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल. ठीक है, इसमें लेटर से द हेडिंग इज समथिंग एज महेंद्र सिंह धोनी इज बैक. दिस इज द टाइटल. ठीक है, दिस इज द टाइटल ऑफ दिस आर्टिकल, एंड द टाइटल ऑफ दिस आर्टिकल इज नरेंद्र मोदी इज बैक. ठीक है, इस टॉपिक पे पूरा एक आर्टिकल मैंने लिखा है. ठीक है, पूरा यहाँ पर टेक्स्ट सब है जैसे नॉर्मल आर्टिकल में होता है. नाउ माय क्वेश्चन अराइजेस कि इफ यू हैव टू क्लासेस, let's say if you have two classes in which you have to predict ki whether this document is belonging to politics or it belongs to cricket, whether this document belongs to politics or cricket. ठीक है, so this is essentially what classification of text means. Given you have few text, you have to classify into some given classes. ये ऐसे भी हो सकता है, इफ लेट्स से इफ आई गिव यू सम ईमेल, अगर मैं तुमको कोई ईमेल दे दूं या कोई मैसेज दे दूं समथिंग लाइक दैट, तो स्टिल यू कैन क्लासिफाई कि भाई वो ईमेल स्पैम है या नहीं, समथिंग लाइक दिस, है ना. इफ आई गिव यू सम ईमेल, so you have to predict whether it belongs to spam or not, something like this. तो यही होता है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन. so जब हम इसको डील करते हैं, there are few steps involved. I'll tell you all this. इस टेक्स्ट क्लासिफिकेशन को हम एनएलपी पे भी देखेंगे. हमारा एक पूरा एक कोर्स होगा, सेशन होगा एनएलपी पे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जहां पे द फर्स्ट टू स्टेप्स वुड रिमेन कॉमन. हम जिस तरह से डेटा को प्रिपेयर करेंगे और फीचर एक्सट्रैक्ट करेंगे, इट विल रिमेन सेम. ओनली चेंज वी विल सी कि जिस मॉडल पे हम ट्रेन कर रहे हैं वो चेंज होगा. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू मेक योर टेक्स्ट क्लासिफाइड इनटू सम कैटेगरी, हाउ डू वी डू इट. सबसे पहले लेट्स सी. सो ऐसे समझो, लेट मी राइट इट समथिंग, लेट मी रेज इट, या रुको मैं नीचे लिखता हूं. let's say I am giving you a sentence 1, that Mahendra Singh
धोनी is a player of IPL team, let's say CSK. If this is your text, ये पूरा एक sentence है, right? This is an entire sentence. अब अगर ये सेंटेंस मैं कंप्यूटर को फीड करूंगा तो पहली बात तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा कि भैया तुमने क्या दिया है. कंप्यूटर के लिए पॉसिबल ही नहीं है. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि तुम पहले इस सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो, इंडिविजुअल यूनिट में इसका सेंस बनता हो. लाइक महेंद्र इज अ वर्ड, सिंह इज अ वर्ड, धोनी इज अ वर्ड, इज अ वर्ड, A is a word, player is a word, off is a word, IPL is a word, team is a word, CSK is a word. Right? ये इंडिविजुअल टोकन अगर मैं तुमको पाइथन में भी, अगर पाइथन का सेशन याद होगा पहला, तो उसमें मैंने बताया टोकन क्या होता है. टोकन इज एन इंडिविजुअल यूनिट जिसका एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज योर टोकनाइजेशन. टोकनाइजेशन में क्या करते हो तुम कि गिवन अ टेक्स्ट, you break it down in some words or token. For example, you can break it in something like Mahendra, this is your first token, another token is Singh, and so on. So this is what your tokenization was. Okay, this was what tokenization was. The next step which is involved in your data pre-processing, this is a kind of process तो पहले ये सब कर रहे हो. Next thing is normalization. What you do, given a few words जो तुमने टोकनाइजेशन से लिया, तुम उसको लोअर केस में ट्रांसफॉर्म कर देते हो, तुम सबको कन्वर्ट कर देते हो लोअर केस में, जिससे क्या होता है एक यूनिफॉर्म टोकन बन जाता है. समथिंग लाइक दिस. इफ यू हैव दिस महेंद्र सिंह, M is capital here, S is capital, so you can actually do it something like MAH Mahindra and so on, SINGH, S is small, like this. तुमने क्या किया, जितने भी कैपिटल लेटर्स थे उसको स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया. दिस वाज व्हाट नॉर्मलाइजेशन इज. नेक्स्ट कम्स अ वेरी क्रूशियल स्टेप व्हिच इज नोन एज स्टॉप वर्ड्स. जैसे एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, महेंद्र सिंह धोनी इज अ प्लेयर ऑफ IPL टीम CSK. ठीक है, let me write another sentence here. Let me write another sentence. Narendra Modi is the Prime Minister of India. If this is your another sentence. अगर मैं इसमें भी normalization और ये सब करूं तो I can have the word something like ऐसे, Narendra Modi is the PM of India. ऐसा हो सकता है ताबिश, नंदिनी? जैसे कल हमने देखा था टोकनाइजेशन कर दिया, जिससे हमने वर्ड्स को पूरे सेंटेंस से वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट किया. देन हमने नॉर्मलाइजेशन किया जिसमें हमने कैपिटल लेटर को सब सारे जितना टेक्स्ट वर्ड बन रहा है, मेरा टोकन बन रहा है, सबको स्मॉल लेटर्स लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया. अब जब यहाँ पे ध्यान से देखो तो देर आर फ्यू वर्ड्स जो दोनों, जैसे ये हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो अगर सेंटेंस है तो दिस इज बिलोंगिंग टू द कैटेगरी क्रिकेट, राइट? If this is the sentence, it is belonging to the category politics, right? Yes. अब अगर मेरे को देखना होगा तो this Mahendra is giving me some context कि हाँ ये हो सकता है कि क्रिकेट का हो. सिंह धोनी, this is giving me a context that it is belonging to cricket. Player, IPL team, CSK, ये सब ऐसे टोकन्स है जिससे हमको पता लग रहा है, कंटेक्स्ट मिल रहा है कि ये है क्या, राइट? लेकिन इसमें कुछ देखो ऐसे ऐसे भी वर्ड है जिसका कोई सेंस नहीं है. इज, ए, ऑफ, राइट? बिकॉज ये दोनों कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं.
इसका कोई एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट नहीं है अगर वो क्लासिफाई करना हो उस पर्पस से। ग्रामेटिकल है, ऑब्वियसली ग्रामेटिकल है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रामेटिकल कंटेक्स्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट whether this word is crucial to classify this entire sentence in either of the two category। क्या इस सेंटेंस से मेरे को कोई आइडिया मिल रहा है कि किस क्राइटेरिया में बिलोंग करेगा? इससे नहीं मिलेगा, इससे आई विल नॉट गेट। हाँ, इफ आई विल यूज दिस कीवर्ड, इफ आई यूज दिस टोकन पीएम, तो हाँ इससे हमको पता लग रहा है कि दिस शुड बी बिलोंगिंग टू पॉलिटिक्स क्राइटेरिया कैटेगरी, सॉरी। इफ आई एम यूजिंग दिस कीवर्ड नरेंद्र मोदी, इससे हमको पता लग रहा है कि हाँ ये पॉलिटिक्स में बिलोंग कर रहा है ये सेंटेंस। बट इससे मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, द से नहीं समझ में आ रहा है, ऑफ से नहीं समझ में आ रहा है कुछ, बिकॉज ये दोनों ही केस में ये पॉसिबल है कि आई विल यूज दिस टोकन। So what we'll do, the third step is we'll drop this stop words. These are known as stop words. जिसका कोई inherent meaning नहीं होता है to classify, कोई context नहीं बनता है। So what we'll do, we'll remove all such words like the, I don't need is, I don't need the, I don't need of. If you could see only these 4 tokens, इससे भी तुमको आइडिया मिल जाएगा कि दिस 4 tokens belongs to your category of politics। अगर मैं यहां देखूं, अगर महेंद्र सिंह वाले एग्जांपल में देखें, so I can actually remove these is, I can remove a, of, I can remove these and still I'll get the context कि हाँ ये जो है पूरा जो बाकी जो बच गया कीवर्ड tokens, it belongs to the category of cricket। शशांक समझ में आ रहा है? हाँ परफेक्ट। इसमें कुछ अभी कुछ एकदम नया मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं एकदम स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ कैसे करते। बिकॉज अगर तुम यहां देखो, अगर मैं सिर्फ इन 4 कीवर्ड पे ही फोकस करूं, बाकी मैंने सारा जो यूजलेस स्टॉप वर्ड थे उसको रिमूव कर दिया, स्टिल इफ आई रीड दिस नरेंद्र मोदी पीएम इंडिया, ओके नरेंद्र मोदी ठीक है, पीएम ऑफ इंडिया, पीएम इंडिया, हमको एक आइडिया मिल रहा है कि दिस इज बिलोंगिंग टू योर पॉलिटिक्स, राइट? So this is your third step, which is known as dropping stop words. Now comes stemming process. Stemming में देखो क्या होता है। Let's say I have this another statement. Let's say Sachin Tendulkar is running very fast। If I have this sentence and if I have to classify, so अगर मैं tokens अगर extract करूं पूरा normalization सब करके और your stop words हटा के, तो I could have something like Sachin Tendulkar, then you have this running very fast। ये आ रहा है। यू कैन ऑल्सो से कि हाँ भैया आप वेरी भी हटा सकते हैं, बिकॉज इससे कुछ स्पेसिफिक हमको नहीं पता लग रहा है, ठीक है। सो आई हैव दीज 4 टोकन्स, सचिन तेंदुलकर रनिंग फास्ट। तो तुम ध्यान से देखो, इफ आई रिमूव दिस ing फ्रॉम दिस सेंटेंस रन, if this word, still I'll have the same meaning, Sachin Tendulkar run fast। don't think it about grammatically, grammatical purpose से मत देखो, जो कंटेक्स्ट ये सेंटेंस हमको मिल रहा है उसको देखो। द कंटेक्स्ट इज एसेंशियली कि Sachin Tendulkar run fast। Still I am able to say कि if I'll have these 4 keyword, I can say that it is belonging to your cricket criteria, right? Tendulkar can also be removed। हाँ तेंदुलकर तुम रिमूव कर सकते हो, बट सचिन तेंदुलकर इज अ कीवर्ड, हम दोनों को एक साथ यूज करेंगे। बट क्योंकि हमने टोकनाइजेशन किया है, तो टोकनाइजेशन तो सबके लिए यूनिफॉर्म होगा। अगर कोई दो वर्ड है बीच में व्हाइट स्पेस है तो वो तो टूटेगा ही, राइट? सचिन, अगर मैं यहाँ पे सचिन पायलट लिख दूं तो दिस इज अ पर्सन बिलोंगिंग टू पॉलिटिक्स क्राइटेरिया कैटेगरी। तो अगर ये सेंटेंस होता है सचिन पायलट रन्स फास्ट, सो यू कैन से ये पॉलिटिक्स का था, ठीक है शशांक?
Sachin Pilot is a politician from Rajasthan. So that is why we are not dropping it. हम देखो हम ड्रॉप तब करते हैं जब हमको कोई एकदम कोई काम नहीं है. बिकॉज अगर तुमको मैं याद कर रहा हूँ, जैसे हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते थे, वेरिएंस बढ़ता था. रिमेंबर, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता था हमारा वेरिएंस बढ़ता था. एंड आई डोंट वांट दैट. क्यों? हम जितना कम कॉम्प्लेक्स रखेंगे उतना अच्छा है. बहुत कम भी नहीं करना. जैसा कि तुम बहुत कम ये भी हटा देते तुम्हारा बायस बढ़ जाता. वो भी मेरे को नहीं चाहिए. मेरे को एक स्वीट स्पॉट चाहिए बीच का कुछ. सो एसेंशियली हमने क्या किया कि जो रूट वर्ड होता है, जैसे रनिंग का रूट वर्ड क्या है? रन, राइट? रनिंग का रूट वर्ड क्या है? रन. तो मैं सिर्फ उसी को रखा, आईएनजी हटा दिया, बिकॉज उससे फिर कॉम्प्लेक्सिटी मेरा बढ़ जाएगा जब हम उसको वेक्टराइजेशन टोकनाइजेशन करेंगे. So this is what stemming is. Stemming is doing what? Whatever word you may give it, it will extract its root word and it will drop the rest of it. जैसे running में ing को उसने हटा दिया. Still I'll have the context कि that person is running. It is able to run. ठीक है? ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? Perfect. Now comes your next step, which is known as feature extraction. अब feature extraction is a very crucial step because this is what which determines your class. इससे पहले तो हमने क्या किया? डेटा को प्रिपेयर किया है हमने. जैसे ऑपरेशन होने के पहले पेशेंट को पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है. अगर कहीं पे अगर सर्जिकल ऑपरेशन है तो वहां पे बीटाडिन लगाया जाता है. मींस प्रिपेयरिंग द पेशेंट फॉर द ऑपरेशन. अब तुम एक्चुअली स्टार्ट करते हो अपना ऑपरेशन प्रोसीजर कि तुम यू स्टार्ट एम्पुटेटिंग समथिंग और समथिंग लाइक. So the very first thing which is known as bag of word, ये होता क्या है? जैसे देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 4 एग्जांपल लेता हूँ मैं. ठीक है? I'll take 4 examples जो तुमको sklearn की sklearn में भी एग्जांपल में मिल जाए. ठीक है? Let me have this your document 1. So your document 1 says this is the document. This is the document. This is the text in your document 1. You have this document 2 which says this document is second document. This is your next document. I'm using this example from sklearn only. तो अगर ये क्लियर अगर नहीं होता है तो I'll try क्लियर हो जाए, बट इन केस नहीं होता है तो तुम sklearn में भी जाके देख सकते हो. Have this and this is the third one. This is your third document. And next comes your fourth document. Write something as, is this the first document? This is your document. What if you use yellow ink on the black background? Okay, I'll try. ये clear है ना नंदिनी? Perfect. चलो. Sorry इसके लिए. चलो. Now what we do actually कि let us see कि what are all the important tokens which are common to all of these documents. जब हम ऐसे multi class, like you have document 1, document 3, document like here there are 4 documents. So if you could see, if you want to extract the important keywords, what are the important keywords? What are the important tokens which will actually help us classify this? So you may have something as this is a document. Document is a keyword token which we need. This is third. I need this. This is second. I need this. This is अच्छा यहाँ पे एक word मैंने छोड़ दिया first document.
So see, what are the important tokens we need? The tokens are, just a second. The tokens are, ये भी visible होगा, I guess. See, what are the important tokens? The very first token which comes to my mind, you can have this something as, like, you can start with alphabetically. You have something as, let's say you have this document. Then the next keyword is, let's say, first. Next keyword is, let us say, is. If I take second, these are all I'm extracting randomly. You can have D, you can have third, you can have this, and you can also have this and. So these are all the tokens जो मैंने extract किया. Also, let me write it all small. Second and. So these are all the tokens जो मैंने extract किया. Now what is crucial? कि we keep a count. हाँ सुशांत. श्रीजय पूछ रहे थे टोकन्स हम लोग अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, किसी को भी बना सकते हैं. मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ बिकॉज ये सेम एग्जाम्पल एसक्यूएल के डॉक्यूमेंटेशन में इसलिए मैं ये कर रहा हूँ. इफ यू वांट टू एक्चुअली सी हाउ टोकनाइजेशन वर्क, देयर इज अ लाइब्रेरी हम जो एनएलपी में डिस्कस करेंगे, एनएलटी के वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे. इसलिए मैं अभी बोला मैं आई एम टेकिंग इट रैंडमली जो एग्जाम्पल एसक्यूएल के डॉक्यूमेंटेशन में आई एम यूजिंग दैट ओनली. सो लेट्स से दिस इज द एग्जाम्पल. So now what happens is if let's say in a text this first keyword appears a lot of time, बहुत ज्यादा ही बार आता है, तो I can have a intuition कि नहीं, this document belongs to document 1, this text belongs to document 1. क्या कर सकते हैं ऐसा? Let us मैं example देता हूँ. I have this article. Let us say, let me use few keyword, MS Dhoni, and you have Narendra Modi. I have this article 1, I have this article 2. ठीक है? Now what is important? जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ 2 टोकन का बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे टोकन हो गए. What we do actually is we keep a count कि कौन सा कीवर्ड किस आर्टिकल में कितना बार अपीयर हुआ है. Let's say the MS Dhoni appears 80 times in article 1 and 7 times in article 2, and Narendra Modi appears for 50 times in article 1 and 90 times in article 2. So can we say if I'm talking about article 1, this belongs to the category of cricket? Can I say? Because MS धोनी का कंटेक्स्ट क्या है? क्रिकेट का. सो अगर वो कीवर्ड किसी आर्टिकल में कंपैरेटिवली नरेंद्र मोदी से ज्यादा अपीयर कर रहा है, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वो आर्टिकल belongs to the cricket category. Remember, I'm using this word chance because we are talking about probability. Naive Bayes works on probability. There is a very high probability that the article 1, since the count is very high as compared to Narendra Modi for article 1, this article should be belonging to this category of cricket. अगर तुम यहाँ पे देखोगे, Narendra Modi, MS Dhoni appears for 7 times and Narendra Modi appears for 90 times. So this would be belonging to politics. अगर if you could remember, yesterday मैंने एक फॉर्मूला बताया था काउंट करके, probability of x belonging to some class C के is count of basically x belonging to some input, whatever you want to say,
given that it is from class ck into your, or you may say and y is equals to class ck. मैंने एक ये फॉर्मूला बताया था, this one. If you have some input xi, given that your output is class ck, it is given by this formula. So you can see, अगर count high है तो the probability would be high because it is directly proportional. So if count is high, if your input count is high, this probability would be greater than some other thing. अगर probability ज्यादा है तो हमने वही देखा था, जिसका probability ज्यादा हम उसको हम account करते हैं. So if the count of MS Dhoni in article 2 is, if it is 80, if it is 50 here, तो इसका count ज्यादा है तो इसका probability ज्यादा होगा. That is why it is belonging to cricket. यहाँ देखते हैं नरेंद्र मोदी का count इस कीवर्ड का ज्यादा है, right, as compared to 7. Therefore, when we are talking about probability, the probability that article 2 is belonging to politics would be very high. तो देखो होता क्या है actually, ऐसे there will be multiple more keywords. There will be multiple more. This is known as bag of words. This is known as bag of words. Bag of words. This is known as bag of words. इसमें क्या किया मैंने, देखो मैंने क्या किया कि जितने भी इंडिविजुअल कीवर्ड थे उसका मैंने एक काउंट बनाया. जितने भी इंडिविजुअल कीवर्ड्स थे मेरे, मैंने उसका काउंट बनाया. ठीक है, और उस काउंट के बेसिस पे मैं ये डिटरमाइन किया कि वो किस कैटेगरी में बिलोंग करता है. ठीक है, अब देखो, अब इसमें भी क्या होता है कि ऐसे ऐसे मेरे को कुछ कीवर्ड मिलते हैं. जैसे मैं एक तुमको एक कर्व बताता हूं. एक, if I have this graph where it is some frequency and it is number of words. अगर मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं तो उसका ग्राफ ऐसे जाता है. दैट मीन्स देर आर फ्यू वर्ड्स जो बहुत ज्यादा अपीयर किया है एक डॉक्यूमेंट में, एंड देर आर फ्यू वर्ड्स जो डॉक्यूमेंट में बहुत कम अपीयर किया है. राइट, दिस इज हाउ इट इज प्लॉटेड. अगर तुम कोई भी डॉक्यूमेंट देखोगे तो देर आर फ्यू वर्ड जो बहुत बार अपीयर होता है एंड देर आर फ्यू वर्ड जो बहुत कम अपीयर होता है. दिस इज समथिंग लाइक दिस. अब इसमें कभी कभी ये होता है, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि एक्चुअली जो क्लासिफिकेशन हो रहा है वो इस वर्ड पे हो रहा है. यहां अगर कोई वर्ड है, लेट्स से देयर आर सम वर्ड, देयर इज सम वर्ड, जैसे वहां पे था MS धोनी. अगर सेंटेंस में बाकी वर्ड, जैसे क्रिकेट भी वर्ड यूज हुआ है, हिटिंग भी हुआ है, रनिंग भी हुआ है, विकेट कीपिंग भी हुआ है, समथिंग लाइक दैट. if all these words are, so उसमें तुम देखो, if I have something, let's say running, if I have fit, if I have cricket, if let's say these 4 are your tokens. अब तुम यहां पे देखो, हमारा क्लासिफिकेशन बेसिकली ये 2 कीवर्ड के कारण हो पाएगा ज्यादा अच्छे से. हाँ, इसका भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंस रहेगा, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे क्लासिफिकेशन के लिए. राइट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और ये रनिंग तो नहीं होगा, रन होगा, माय मिस्टेक. ये रन कीवर्ड है, फिट कीवर्ड, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, बट नॉट एज मच एज दिस. ठीक है, अब यहां पे दिक्कत ये है कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट पे रन का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा आया है, फिट का ज्यादा आया है. ठीक है, तो हो सकता है कि अगर मैं एक पॉलिटिक्स का बनाऊं डॉक्यूमेंटेशन, तो उसमें ये भी लिख सकता हूं कि दिस पर्सन इज रनिंग फॉर द रोल ऑफ प्रेसिडेंट डैश रनिंग. इसमें भी बहुत ज्यादा हो सकता है. राइट, उसमें भी देयर इज अ हाई चांस दैट दिस कीवर्ड अपीयर्स अ लॉट ऑफ टाइम्स. बट उसमें हमको प्रेफरेंस किसको देना है? अगर कोई मेरे पास कोई नेता का नाम हो, कोई अगर पॉलिटिशियन का नाम हो, उस पर हम ध्यान देंगे. या फिर कोई दूसरा कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो, या कोई भी ऐसा कीवर्ड जो पॉलिटिकल हो, उसको हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे. राइट. सो हम क्या करते हैं, द नेक्स्ट स्टेप विच इज नोन एज टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी. दिस इज नोन एज TF-IDF. सो इसका मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं यहां पे.
दिस इज नोन एज, आई गेस, अच्छा रुको मैं इसको ब्लू से लिख देता हूँ, टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। तो तुम इसमें करते क्या हो बेसिकली, कि यू एक्चुअली एडजस्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड विच आर नॉट इंपॉर्टेंट। जैसे यहां पे यू हैव सीन दैट द कीवर्ड रन इज नॉट एज मच इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द कीवर्ड एमएस धोनी और क्रिकेट, राइट? तो तुम क्या करोगे कि तुम इसका थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा चेंज करोगे, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी को तुम यहाँ पे चेंज करोगे। लेट्स सी, तो तुमने क्या किया कि इसको थोड़ा ड्रॉप कर दिया, समथिंग लाइक दिस, कुछ तुम्हारे चेंज कर दिए। तो एग्जैक्ट ऐसे नहीं, बट तुमने क्या किया कि एमएस धोनी के कीवर्ड को सबसे मतलब एडजस्ट करके इंप्रूव कर दिया, क्रिकेट को इंप्रूव कर दिया, फिट और इसको थोड़ा रिड्यूस कर दिया। जीरो भी नहीं किया बिकॉज कुछ कंटेक्स्ट हमारा फिर भी बन रहा है इन दोनों कीवर्ड से। दिस इज अ मोर आइडियलिस्टिक अप्रोच। दिस इज विदाउट एडजस्टमेंट, दिस वाज विथ एडजस्टमेंट। तो थोड़ा सा समझना है कि हमने क्या किया कि जैसे ये दो कीवर्ड थे, इसको हमको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है, तो मैं उसका क्या किया, काउंट कम कर दिया, थोड़ा एडजस्ट कर दिया। जिस कीवर्ड से हमको एक्चुअली सेंस बनाना है, लाइक जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर श्रेया, ताबिश? परफेक्ट। now what happen now what happens is there is this n-gram technique, there is this n-gram technique। अब इसमें क्या होता है, अब कंप्यूटर को तो नहीं पता है कि व्हाट दिस एमएस धोनी इज, व्हाट दिस क्रिकेट इज, व्हाट दिस फिट इज, व्हाट दिस रन इज, राइट? इसको तो नहीं पता है, इसको तो नहीं ना पता है, Right. तो बेसिकली क्या, and what n-gram does is it provides you some context to actually your number of words। let us say कि Mahendra, this is your first token, this is your second token, this is your third token, right? So Right. the number of word is what? N is what? 3. So what this procedure will do, it will provide you a context to this number of text together। ये अलग अलग कीवर्ड है, एक साथ तीन मैंने एक साथ बंच बना, इसका एक कंटेक्स्ट बना दिया कि this belongs to your cricket, this is a cricket sports person, right? Or you may say he is a wicket keeper or personality belonging to cricket, something like। Right. जैसे जैसे शशांक ने एग्जांपल दिया है, तेंदुलकर वहां से ड्रॉप कर देते, तो सचिन का इंडिविजुअली कोई सेंस नहीं है। अगर मैं सचिन तेंदुलकर लिखूं और सचिन पायलट लिखूं, तो दोनों का अलग अलग कंटेक्स्ट हो जाएगा, राइट? Right. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई राइट सचिन तेंदुलकर and if I write Sachin pilot, number of words कितने हैं? 2। if I'm applying this n-gram technique in your keyword 1, your keyword 2, the context is cricket here, yeah, correct? The context is politics here, clear? So this is what n-gram technique is, and once you are done with this feature extraction, then actually you can build a model। हम यहाँ पे नई बेस क्लासिफायर यूज करेंगे, बट दिस इज वेरिएबल। तुम कोई और मेथड से करना चाहो तो भी कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज रैंडम फॉरेस्ट फॉर दिस, चलेगा। इफ यू वांट सम अदर ग्रेडियंट बूस्टिंग यू कैन डू इट, नो इश्यूज। इनिशियल स्टेप जो पहला दो स्टेप था दैट विल रिमेन सेम, बिकॉज हमारा कंप्यूटर टेक्स्ट को जैसे हम डील करते हैं वैसे डील नहीं करता है, राइट? Right. परफेक्ट। सो आई गेस शशांक, जैसे दिस वाज प्रीटी क्लियर, समझ में आया कि कैसे वर्क करेगा, ठीक है? यश, नंदिनी, ताबिश, श्रेया, दिस इज हाउ वी एक्चुअली क्लासिफाई द सेंटेंसेस। अब जैसे देखे दिस
अगर अब MS धोनी का काउंट अब बढ़ गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर इसका काउंट हमने बढ़ा दिया तो देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट इफ यू गेट MS धोनी, sorry, let me write it in verse. So there is a very high chance that if you're given with this keyword MS Dhoni, that particular sentence will belong to cricket category of cricket. If you particular document will belong to cricket, so अब इसका probability high हो जाएगा, जो जरूरी भी है, because MS Dhoni is the important keyword here rather than running or fitting, something like that. So this is how essentially we deal with text classification. ये सारे steps involved होते हैं. Is it clear? Is it clear? अब मैं एक और चीज डील करता हूँ. Let us say if you have some document. Let us say you have some document. ठीक है? And in this document, what you have a set of keywords. Let us say W1, W2, W3 till WN or WT. Let me write T here. If these are all your keywords and you have an output Y class, you have some output कि ये keywords है, इसके basis पे I have some class C1, C2 और spam, no spam, कुछ भी ऐसे कोई class हो सकता है, something like that. Now how do they actually calculate some probability? हम probability calculate कैसे करते हैं, ये हम देखते हैं. Let me see, अगर मैं इसको थोड़ा सा improve करूं. Perfect. How do we actually see the probability? You may have different document D1, D2, something like D testing, something like this. ठीक है, अलग अलग डॉक्यूमेंट पे तुम फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे हमने यहाँ पे देखा दोनों आर्टिकल में अलग अलग कीवर्ड. यहाँ पे तुम्हें दो किया ऐसे, यू विल डू इट फॉर मल्टीपल टाइम्स. ठीक है, ऐसे यू विल डू इट फॉर मल्टीपल थिंग एंड यू विल हैव द काउंट हियर, समथिंग लाइक दिस. सो नाउ सी हाउ डू वी एक्चुअली क्लासिफाई थिंग्स. So if I tell you about the probabilistic approach, the probability was something like find me the probability that your output is some CK. Some CK. CK could be your 0 if you're talking about spam, no spam, 0 would be no spam, 1 would be spam, something like this. तो हम कोई भी दो कैटेगरी पे हम बात करें और तीन कैटेगरी, मल्टीपल कैटेगरीज के लिए तुम नई बाइस यूज कर सकते हो. दिस इज द बेस्ट पार्ट. सो लेट अस से find me the probability that your output is some class CK given that your document is some document, let's say document of testing, because हम यही करेंगे, हम डॉक्यूमेंट को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट करेंगे. ठीक है, what I have to predict कि if I give you this document, find me the probability कि ये particular CK क्लास में belong करेगा. और you may have something like, इसको अगर मैं एक थोड़ा easier chunk में अगर तोड़ दूं, so you can have find me the probability that it is a spam, an email is a spam if I give you some email, let's say E1. अगर एक email E1 है, E1 में मैंने कुछ text रखा हुआ है, if I give you all these text, find me the probability that it is a spam. So this is how conditional probability works. ठीक है? So if you could see from here, there are a bunch of tokens which are involved. There are a bunch of tokens which are involved, W1, W2, W3, something like WT. There are the bunch of tokens which are involved. So if I use Bayes' theorem here, I have this intuition that this would be this thing, the probability of test given that your output is some CK times probability of y is equals to CK. We are dropping the denominator because हमने कल देखा था कि denominator से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ऑर्डर चेंज नहीं होगा. क्यों हम मल्टीप्लिकेशन करें? बिकॉज whatever you will do, the denominator will remain constant. So we are dropping it. क्यों? अगर तुम करना चाहते हो, you may do it. हाँ शशांक. ये प्रोबेबिलिटी एक्चुअली फाइंड क्यों कर रहे हैं हम लोग? देखो, इसमें
जैसे यहाँ मैंने बताया let us say the probability, अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं इसको डिस्कस करता हूँ यहाँ पे. So if I say Shashank कि the probability that your article is of cricket, given that you have this MS Dhoni is, let's say, 0.8, and the probability that your output is cricket, ये क्या हो रहा है, just a second, given that it is Narendra Modi, it is 0.6. ठीक है शशांक, ये दो प्रोबेबिलिटी मेरे को मिला. अब इफ आई हैव टू टेक अ डिसीजन कि अगर क्रिकेट प्रेडिक्ट करना है तो विच इज अ मोर इंपॉर्टेंट कीवर्ड, तो आई कैन सी 0.8 इज अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी देन 0.6. तो जिसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा आई विल क्लासिफाई उसके लिए. ठीक है, दिस इज व्हाई वी यूज प्रोबेबिलिटी. शशांक क्लियर हुआ? क्योंकि देखो इससे पहले जो हमने जितना क्लासिफिकेशन किया था वो ज्योमेट्रिक अप्रोच पे था कि हमें कुछ डिसीजन बाउंड्री क्रिएट करनी थी. उस डिसीजन बाउंड्री के बेसिस पे हम डिसाइड करते कि अगर लेफ्ट उसके होगा तो वो क्लास इसमें बिलोंग करेगा, राइट उसमें होगा तो क्लास इसमें बिलोंग करेगा. दिस वाज व्हाट वी हैव सीन इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन. ठीक है, अब नाउ सी हियर, this document test will have this bunch of tokens, right? So this can further be decomposed into the probability of W1 given that it belongs to CQ, probability of W2 belongs to some class CK, so on till the probability of WT provided that it is CK, and in last you have this product, and in last you have this product where you multiply this whole thing. Just a second, ये zoom out नहीं होगा क्या? अच्छा, then you multiply it with your last term, probability of y is equals to ck. हमने देखा था कि how we हमने इसको product form में क्यों किया, because we have assumed that our feature was independent. So जब हमारा probability, हमारे event independent होते थे तो probability is their product. So if you calculate this thing, you will get some probability, and if I'll find the maximum of it, जिसके लिए maximum निकला, I'll assign it to that class only. But this is how we actually get the probability. अगर like ताबेश, शशांक, तुमने like कल का सेशन ज्वाइन नहीं किया था तो एक बार इस सेशन का और उसके बाद देख लेना, बिकॉज जैसे एक कॉमन तरीका ये है कि इफ A and your B are independent event, क्लास 12 का रिकॉल करो, the probability of A and B, it can be given as probability of A times probability of B. Remember? ताबिश, शशांक, तो हमने ये एक इंट्यूशन, हमने एक assumption किया कि A और B इंडिपेंडेंट होगा तभी ये होगा, राइट? इसका कन्वर्स भी हो सकता है कि if your probability is decomposed into the product, then your events are independent. तो हमने यही अप्रोच यूज किया यहाँ पे, हमने यही अप्रोच यूज किया यहाँ पे कि हमने बोला कि all our features are independent, all our features are independent, then we'll simply predict, we'll simply have the probability कि what is the probability that this keyword appears in a document which belongs to this class, what is the probability that this keyword appears in this class, and so on. इसको मैंने बकायदा कल एक एग्जाम्पल से मैंने एक्सप्लेन किया था प्ले टेनिस डेटा सेट के साथ. आई गेस नंदिनी यू वुड बी एबल टू रिकॉल दैट, हमने ये किया था कल. तो लाइक शशांक, ताबिश, तुम उसको देखना, एक बार देखना कैसे मैंने उसको प्रॉपर्ली डिकम्पोज किया था, एंड वी हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला ओनली टू गेट द प्रोबेबिलिटी. So I guess this part was clear. How do we actually classify our document? Now let's head back to the notebook and see the implementation part of.
इतना पार्ट में किसी को कोई क्वेरी? शशांक, नंदिनी, ताबिश, श्रेया, कोई क्वेरी? No. परफेक्ट। ऐसे शशांक, तुमने बोला कि तुमने क्लास नहीं ज्वाइन किया। ऐसे समझो एक बास्केट है, ठीक है, एक बास्केट है, ठीक है, उस बास्केट में there is some fruit, apple and mango. Let's say 2 fruits are there, and you know the probability that, let's say, to get a mango the probability is 0.2, and to get an apple the probability is 0.8. So you may say कि आप जो हम next fruit जो निकालेंगे, there is a very high chance that it belongs to apple category. Although गलत हो सकता है, but for all 8 times out of 10 times you would be correct, right? अगर 10 बार इस स्टेप को करोगे, राइट? शशांक, गलत। एक बात बताओ, अगर तुम पहला एप्पल निकाल दोगे तो स्टिल द प्रोबेबिलिटी वुड रिमेन सेम। अब तो नंबर ऑफ एप्पल कम हो गया ना, नंबर ऑफ टोटल फ्रूट तो कम हो गया उस बास्केट में ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, कि इफ यू डू समथिंग देन उसका रिजल्ट नेक्स्ट इवेंट पे क्या पड़ेगा। लेट्स से अगर 4 फ्रूट था, 2 are apple and 2 are mango, the probability is 0.5 for each apple and banana, apple and mango. Now if you remove one fruit, let's say apple, the probability would change, right? The probability would change. तो हमने यहाँ पे जब यहाँ पे तुम देखो, the probability was changing because the events were dependent on each other, right? The events were dependent on each other. तो अगर हम ऐसा assumption लें कि the event are independent, then we are able to do a very nice assumption. If the event are independent, let's say tossing a coin, तुम्हारा पीछे जितना भी हेड आया हो, still if you toss a coin, the probability is 0.5 to get a head or tail next time, regardless of whatever you have done in the past. ठीक है? So now let's head back to our notebook, and I want you all to kindly have this data set in your notebook. Once it is done, give me a thumbs up. Shashank, done. Nandini, Shreya, kindly load this in your notebook. I'm waiting for Nandini. अगर हो जाए तो just give me a thumbs up. Perfect. So now actually head back and see how do we build an email classifier, or you may say spam classifier जैसे हम लोग देखते हैं, ठीक है? We'll build that thing from scratch here. आज सबसे पहले let's import all the important libraries you need. Let us import pandas because हमें data frame में data import pandas as PD. Let's run this. numpy का हमारे को कोई खास काम नहीं है, but अगर जरूरत पड़ेगा तो हम फिर आके यहाँ पे import कर लेंगे। Now let's do what? Let us read this data set. Okay, path. Let me have a data set, a data frame named df pd dot read underscore csv. This is how we read our data set, right? Pretty. अब तो याद हो ही गया होगा, समझ में आ ही गया होगा. So now we have actually loaded our data set. And let's see what is in our data set. मैं comment भी add कर देता हूँ. Load data set. Okay, let's see what is all in our data set. So we can have df.head. So this is how our data set is. There is only 2 category, ham and spam. Ham means it is not a spam. Ham का मतलब है it is not a spam, and spam means कि हाँ वो एक spam है. We have some sentences like this. Let us say for top 3. Let us see the entire. Oops, just a second. So this is how your sentences go. Something like go until during point available, something like this. So this is a ham. You have some spam like free entry in a 2 weekly competition, something like this.
ठीक है, this was what your data set was. Now let's head back and see कि आखिर स्पैम कैटेगरी में कितने सेंटेंसेस बिलोंग करते हैं, स्पैम में कितने बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा जो तुमने पहले पढ़ रखा है उसका लेवल अब थोड़ा ऊपर करूंगा. ठीक है, बिकॉज आई अज्यूम कि अब सारे लोग एक सेम बेस पे आ गए होंगे. So now I'll level up. Now I'll use a group by function in data frame. There is a group by function, df dot group by, and I'll use the category here. I'll use a category here. I want to group it on the categories. Let's run this. ry, okay, ry. So now it is created, and let's do what? Let's see how does it. Let me run this describe function. If I run this, you may see something like there are 4,825 ham emails. ठीक है, जिसमें ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, टॉप कीवर्ड्स. 30 times they have appeared. You have the spam. ठीक है, you have the spam category in which it appears for 747 times, जिसमें से 641 times it is unique, and this is the most important keyword out of it. आया सबका? आया? ताविश, नंदिनी, शशांक, श्रेया? Perfect. Now let's do what? You may see there is this ham and spam category. There is this ham and spam category. कंप्यूटर को ये कैटेगरी नहीं पता है. कंप्यूटर ओनली नोज बाइनरी स्टफ 0 1. सो लेट अस से कि अगर स्पैम होगा तो आई शुड डेजिग्नेट इट अ कैटेगरी ऑफ 1. अगर वो हैम हुआ तो आई शुड डेजिग्नेट इट अ कैटेगरी ऑफ 0. ठीक है, जैसे यहाँ डेटा सेट देखोगे तुम, अगर यहाँ कैटेगरी हैम है तो आई रिप्रेजेंट इट बाय 0. अगर स्पैम हुआ तो आई रिप्रेजेंट इट बाय 1. सो लेट अस actually do it. So if you want to do it, how do we see? We don't have a spam category. Spam category यहाँ पे नहीं है. There is no such column as spam. Spam है या नहीं, that is what we want. So let me add a spam column here. Yes, please, spam column. And in that spam column, what do I want? That first let us see what is in our df.category. Category में क्या क्या feature है यहाँ पे? df dot let me have this df categories category. Let me see what is in our this column. Column is pretty obvious. You will get a spam and no spam, something like this. Okay, so what I want, whenever I'll get this ham, whenever I'll have this keyword ham, I'll replace it with 0, and whenever I have this keyword ham, spam, I'll represent it by 1. So I may write df.spam is equals to, I'll iterate in this column, I'll iterate in this column, I'll iterate it in this column, and now I'll have some function. यहाँ पे we'll apply some function. So if you want to apply some function, there is this keyword apply. We'll use this. So जब तुम ये assign कर देते हो, तुम एक particular कोई प्रोसीजर इस कैटेगरी का जो कॉलम है उस पर तुम वर्क कर सकते हो. So what I'll say, I have a lambda function. If you could recall lambda function from Python, lambda, I'll name it as x. So if x is 1, if x is equals to spam, if you'll get this keyword, spammy and a small man sub spam. Huh? If I'll get this keyword, देखो lambda function का syntax क्या था? We'll have this keyword, then we want to have this attribute जिस पे हम work करना चाहते हैं. We want to work on x, and then your expression. So your expression is replace x by 1 if you get this keyword spam, else x is equals to 0. Else x else 0.
ठीक है, this is what your lambda function was. अब I guess उस सेशन में किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि भैया why do we use lambda function? So this example gives you a nice idea कि how do we use lambda function. तो अब धीरे धीरे I'll level up the stuff. Let us see how our data set look like. Now you have another column here which just says if it is a ham, if the category is ham, I'll be designated with 0. If I'll get a spam here, I'll get 1 here, right? You may see 1 is there. आया सबका? शशांक, ताबिश, नंदिनी? आया? Perfect. Yes. Now let's do what? Our data set is ready. So when your data set is ready, I have told you multiple times that we actually split our data set. So if you could go to sklearn, you will have model selection. कहाँ गया model selection? You will have model selection. You will have test train split. We'll use this once again from sklearn dot model selection. We'll use it. Tab. Okay, and now I'll split it in this form: X train, Y train, this thing. I'll have 4 different variables. Now just tell me what, let me say that my test size is 0.2, 20%. And now tell me what are the X and Y? What should be my X and what should be my Y? Just tell me. What should be my X and what should be my Y? Clearly the X should be this message. X should be this message because जैसा message है उसके हिसाब से वो classify करना है. नंदनी, शशांक, are you getting? Shreya, are you getting? अरे भाई तुमको classification message पे basis पे करना है ना. So you have to map this message to this Y, whether it is spam or not. So your X is what? df.message. df.message. Not gonna write this thing. I'll copy simply. This is your X. And your Y is df.spam. This. Let me remove this random state. अभी random state हटाओ. Second. So once you do this, your data set has been split. You may actually see, you want to see print X underscore train, comma, Y train. You may actually see your data set is something like this. You have some text and you have some categories. जैसे ये पहला है you all right or what? If this is a text, you all right or not? So this is not a spam, obviously, right? ये spam नहीं है, right? No, sorry, this is 2348. So 2348 is, but I did not slept in the afternoon. Let us say this is a text. So this is not a spam overall. Okay? So you can see it is 0. It is not a spam. You can have something like blot blue tones for 150 pixel reply poly hashtag or something like this. एक तरह का advertisement है, तो this is some kind of spam. ठीक है? आया सबका? Now what we'll do, ये सब तो हमारा text हो गया. These are all our text. Now मैंने बताया कि now what we have to do, हमको इसको tokens में तोड़ना होगा, right? हमें इसको tokens में तोड़ना होगा, right? We have to use it in token. So you can actually use this model here, sklearn.feature extraction,
And in this feature extraction, let me go to this thing, count vectorizer. You may also use this tf-idf. ये मैं homework छोड़ रहा हूँ तुम लोग के लिए. You may use this tf-idf vectorizer. I'll go with count vectorizer. तुम इसको भी यूज कर सकते हो, सेम जैसे हम यूज करेंगे, बस इसका सिंटैक्स चेंज रहेगा. तो सी एक्चुअली ये करता क्या है? This count vectorizer, what does it do? So it simply do what? Given you have some collection of text, it converts into a matrix of token count. Token extract करेगा और हर एक का कितना काउंट है उसका मैट्रिक्स बना देगा अलग अलग डॉक्यूमेंट में. क्लियर है? क्लियर है? For example, if you can see here, if this is your documentation, this is your first document, इसी का मैं बात कर रहा हूँ. This is the first document, this is the second document. ये 4 एग्जाम्पल था, ये 4 एग्जाम्पल था, and these were your keywords and document first. तो अब ये बता रहा है कि 1 2 3 4 4 डॉक्यूमेंट्स थे तुम्हारे पास, तो you have 4 arrays here. पहला वाला ये जो पहला इंडेक्स है, दिस बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, कि डॉक्यूमेंट 1 में ये एंड कितना बार आया? इफ यू कुड सी, एक भी बार एंड नहीं आया, राइट? पहले सेंटेंस में, तो दिस इज 0. थर्ड वाले में देखो ये एक बार आया है, तो यू हैव 1 हियर इन द थर्ड एरे. ऐसे ही डॉक्यूमेंट देखो, पहले एरे में यू हैव 1 टाइम, तो एक बार. दूसरे वाले ईमेल सेंटेंस में देखो एक बार, 2 बार, तो इट इज 2 हियर. तो दिस इज अ मैट्रिक्स. ये काम ये तुम्हारे लिए करके ऑलरेडी देता है, ठीक है? सो लेट अस एक्चुअली यूज इट. So you may have to import this from sklearn, import text. You have to import this count vectorizer. We copy it out. जैसे मैंने वहां नरेंद्र मोदी और रियल एग्जांपल दिया था ना, same. Now let us say we have to call this function. अभी हम ये टेक्स्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज हमारे पास टेक्स्ट ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे ट्रेनिंग सेट में, तो विल नॉट यूज इट. विल सिंपली कॉल दिस काउंट वेक्टराइजर फंक्शन. अगर तुमको इसको देखना है कैसे यूज होता है, तो यू कैन सी एंड एक्चुअली सी हियर हाउ डज इट वर्क्स. मेरी रिटन यूजर गाइड. These are all your parameters जो हम इस फंक्शन के अंदर डालेंगे. If you want some encoding, if you want to lowercase it, preprocess it, tokenizer, stop words, सब इसमें ऑलरेडी ये दिया हुआ है. ngram, analyzer, everything is there. ठीक है? We'll use it here. Let us say my x is, let us say no, my v से हम बोलते हैं count vectorizer. If I call this function, it is now ready. Now what I want कि हमारे ट्रेनिंग सेट में जो कीवर्ड है उसका हमको काउंटिंग करना होगा, बिकॉज हम पहले डेटा सेट को ट्रेनिंग डेटा पे वर्क करेंगे ना. तो आई कैन हैव समथिंग एज, लेट अस से माय एक्स ट्रेन, और इसका काउंट निकालना है. व्हाट आई वांट, इफ यू कुड गो हियर एंड सी अगेन documentation, to get all the count you have to use this function vectorizer. That means तुमने जिससे इसको असाइन किया है dot fit transform, and in this you pass your parameter. If you could see here, fit transform, what it do, it learns the vocabulary dictionary and return the document term matrix. ठीक है? We'll use this fit transform function. And this should work on model v dot. And now what are your x? What is your x? What is x here? If I could, let me remove it. If I could simply print x dot train, let us see what is in our x dot train. So you have this index as well as some text, right? You have this index and some values. अगर data frame का बात करो तो this is your index 53392386. These were your index, and यहाँ पे ये जो है ये values. I only want the values.
Let me get the values here. You may use dot values, and you will essentially get an array of all the values. So I'll pass this values as my x. हमको index का क्या करना है भाई? Why do I want the index? I only want the keywords, which I'll get it from the values. ठीक है? Let me run it. Now it is done. If you can again go to this documentation. Documentation खोल रखा है ना तुम लोग ने सबने? Perfect. Now if you want to see कि कैसे कैसे इसने documentation बनाया है, you have to pass this function to array. ठीक है? You have to pass this function to array, and it will give you the entire array of entire bag of word. This is what your bag of word was. ठीक है? So I'll have this x dot to array. I'll recall it, and sorry, Control Z. Now your x was this x train dot count. ठीक है? This was what जिसमें हमने स्टोर कर रखा है. So I'll replace that x with. ठीक है? So let us print it. So you may have an array of something which looks like this. You have an array which looks something like this. ठीक है? अगर तुमको कोई particular range में देखना है तो जैसे हम एक array में iterate करते थे, like if you want to get the first 3 values, you pass this, you'll have first 3 arrays. First 4, sorry. 0, 1, 2, 3. ठीक है? You may use this. Now let's head back and actually build our function up. Now हमारा data set ready है, हमने उसको तोड़ दिया, feature extract कर दिया है. Now what is important is we want to pass it in our third step, which is we want to train it with naive Bayes classifier. Again I'll head back. Okay, just a second, मैंने ये नहीं दिखाया, just a second. What I did, I have passed this function x dot train, ये हमारा x है, and I have passed this thing to array. So I'll get the entire bag of word. अगर हमको पहला 3 वैल्यू चाहिए, जैसे हम एक array में iterate करते हैं, I'll get this. ठीक है? Now actually let's move back and build our model up. Share this tab. So if you want to get the model, you have to go to naive Bayes Sierra, sklearn.naive Bayes. And in this naive Bayes, I'll work with multinomial naive Bayes. मैंने कल डिस्कस कर रखा है कि हम कब डिसाइड करते हैं कि हमें किस naive Bayes मेथड को यूज करना है. बर्नौली, कैटेगोरिकल, गॉसियन, मल्टीनोमियल, हमने कल ही डिस्कस कर रखा है. जैसे यहाँ पे भी देखो, if you could see, the multinomial naive Bayes classifier is suitable for classification of discrete feature. For example, word count. Word count could be discrete. कोई word 2 बार appear कर सकता है एक बार, कोई 10 बार appear कर सकता है, right? So I'll use this. So if we have to import it, I have to go here and I have to use this thing from sklearn.naive Bayes import multinomial NB. We'll use it. Control C. I'll head back to my notebook. Share this tab and let's build our model up. From sklearn.naive Bayes, I have imported this multinomial naive Bayes. Now let's do what? Now comes हमारा model आ गया. Now we'll build a model. तो जैसा model को normally build करते हैं, there is this function. If I could show you here, share this tab. There is this function multinomial NB. We pass it. Control C. Let's see here. मैंने notebook में इसको बस pass कर दिया. And now our model is ready. अब हम इस model में हमारा data fit करेंगे. I'll say model.fit जैसे हम करते हमेशा. Model.fit, and what do I want to fit? I want to fit my this thing. ये जो array हमने pass किया है, that is your x train count. This thing. And I want to map it with your y train, whatever value you got for y train. So now you have actually successfully built your model. You have completed your model. Now let's do what?
let's make some email. Let's say my email is, I'm doing it for testing purpose. Let us say my email is something like this. My first email is Shrinjay. How are you? This is my first email. Let me have my another email. Let me say कुछ थोड़ा सा कैची डालते हैं. Get flat 50% discount on cricket bat. जैसे एक नॉर्मल एडवर्टीजमेंट होता है, एक्सक्लूसिव ऑफर just made for you, don't miss it, something like this. If these are my two emails, okay, if these are my two emails, you can actually, if you are building in if you are using it some kind of application, तुम backend में यहाँ से email fetch कर सकते हो और you'll get the email, ठीक है. So if you're using it in web development, तुम यहाँ से you'll extract the email from the application and you'll do the same thing. Now let's do what? जैसे हमने X के लिए किया था, let's do it for email. So your email count is v dot transform. जैसे हमने यहाँ पे किया था, ठीक है. We'll transform our values and I'll pass email here, and we'll do what? We'll predict on this thing. Let us get this prediction कि क्या ये particular पहला text, क्या ये पहला text spam है या नहीं, या क्या ये दूसरा text spam है या नहीं. So let's run this. Oh. So it gives me 0 and 0. Okay. It gives me 0 and 0 because इसमें हो सकता है कुछ कीवर्ड हो जो पहले वाले में डॉक्यूमेंट में नहीं है. चलो let me actually change it. डॉक्यूमेंट में मेरा you will get something as up to 20%. इस तरह से मैंने कुछ डाला था. Discount on parking. Offer just for you. Don't miss it. You may see up for my first email, it is showing it is not a spam, and for my second email, it is showing it is a spam. So actually, you can add more and more email in your this data set. You may add more and more document there, so that the inherent vocabulary would increase. ठीक है, because ultimately एक inherent vocabulary बना हुआ है, उस पे वो देखता है कि कितना count किधर आया, then it calculates the probability. So जो मैंने पहले सेंटेंस में कुछ कीवर्ड ऐसे डाले थे जो मैंने इस डेटा सेट में नहीं इंक्लूड किया, राइट. सो वैसे कीवर्ड वुड बी न्यू फॉर इट, तो उसको इग्नोर कर देगा, ठीक है. सो दिस इज व्हाई गेटिंग मोर एंड मोर डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. और ये मॉडल अब जैसे एक बार ट्रेन करिए, नाउ यू विल हैव सम अदर डेटा सेट, यू विल ट्रेन इट, देन तुम्हारा आंसर कुछ चेंज हो सकता है. if I use this keyword, I'll get a nice result. Like अगर देखते हैं यहाँ पे कोई है, नहीं ये तो सीधे ट्रेनिंग डेटा हो जाएगा, तो I'll not use it. चल, so you have something like this. Now let us do what? Let us find its score. Let us find its score. तो let us find its score. तो ऐसा करते हैं, हमारा स्कोर हम निकालते हैं टेस्टिंग डेटा पे. Let us find our score on test data. So I can have X test count, score count. So I'll use this very same thing. V dot transform, जैसे हम करते हैं. If you could see here,
Let me go back to that. कहाँ गया? Feature extraction. What's this count vectorizer? There is this transform function. So what it does, it transforms your entire document into matrix. It extracts token count and it will use it to build the document term matrix, जो हमारा bag of word है. So let us see what is the accuracy of this model based on your testing data. So you can see you have a very high accuracy of 98%. So the accuracy is 98%, which is pretty high. If you could recall, Nandini, Sashank, random forest में हमारा probability was somewhere around 97%. Now you have 98%. हो सकता है तुम्हारा ये actual value कुछ और आया हो, but it is a very high accuracy. यानी कि out of 100 times you will have a 98 times when you will actually able to predict it right. अब तुम इसमें और कुछ transformations कर सकते हो to improve your accuracy. Now let me introduce you with one of the most crucial feature which you will not able to get it in first step, but I'll try, you will get it. अब जैसे तुमने यहाँ देखा कि जब मेरे को अलग अलग डॉक्यूमेंट मिल रहा था, पहले मैं उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा था, राइट? फिर मैं कहाँ गया, हमारा वेक्टराइजर यूज कर रहा था अलग अलग वर्ड के लिए आ रहा था. देन आई वाज यूजिंग दिस मल्टीनोमियल नेम बेस, राइट? अगर मेरे को कोई नया वैल्यू मिले तो आई हैव टू परफॉर्म दिस स्टेप once again. I'll have to get the vectorizer for that document. I'll build that model. जैसे यहाँ देखो हमने ट्रांसफॉर्म फंक्शन यूज किया वेक्टराइज करने के लिए, हमारा वैल्यू मिला, देन हमने वो फंक्शन को कॉल किया यहाँ पे, राइट? करेक्ट? ताबिश, नंदिनी, शशांक, श्रेया, राइट. अब सोचो कि तुम्हारे पास एक ईमेल ऐप है, उसमें 10,000 ईमेल आया हुआ है and you have to classify it. So technically you have to run this model or this two step 10,000 times, right? राइट. हिम्मत करेगा करने का? नहीं. इतना बार कौन करने जा रहा है? So now I would like to introduce you with something which sklearn has, which is known as pipeline. So pipeline वो करता क्या है? It builds a chain of transformer and estimator. I will use this pipeline feature because क्या करता है ये कि एक सीक्वेंस बता देता है कि इसके बाद हमको ये करना है, इसके बाद हमको ये करना है. You simply pass your data set and it will perform the necessary step जो हमने पाइपलाइन में बता रखा है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग घर में चाय बनाते हैं, राइट? हम घर में चाय बनाते हैं, तो अगर शाम में मम्मी चाय बनाई तो पहले सॉस पैन ली, दूध डाली एंड शी डिड ऑल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टेप. फिर जब कल मॉर्निंग में बनाएंगे फिर से वो काम करेंगी, राइट? अगर एक ऐसा तरीका होता कि मम्मी ने एक विंडो में बस जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, दूध, चीनी, चाय पत्ती, समथिंग लाइक दिस, वो सिर्फ उस वहां रख दे और उनको चाय बन के मिल जाए, बीच में जो स्टेप होता है वो उनको नहीं करना पड़े, तो ये काफी कन्वीनियंट होगा उनके लिए. और उस विंडो के अंदर हम ये बता दें कि तुम पहले सॉस पैन लो, फिर उसमें दूध डालो, फिर उसको बॉईल करो, मतलब तुम जो स्टेप करना है उसमें उसको चेंज करने के लिए दूध या जो इंग्रेडिएंट है उसको चाय में तुम उसको स्पेसिफाई कर दो कि इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, एंड यू रिटर्न मी द चाय अल्टीमेटली. ठीक है? दिस इज व्हाई वी यूज sklearn.pipeline. वी विल यूज दिस थिंग pipeline. आया सबका? What it is a sequence of data transformer which gives you some kind of prediction. ठीक है? हमारा डेटा हम ट्रांसफॉर्म करेंगे डेटा, जैसे हमने उसको वेक्टराइज किया, देन क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम लगाया, तो हम डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं फ्रॉम सेंटेंसेस टू टोकन्स टू प्रोबेबिलिटीज. दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग इट. So we'll use this thing up. So if you have to use it, you have to use this thing from sklearn.pipeline import pipeline.
we'll use it. Now we'll do the same thing using sklearn pipeline. So let me back here. Just a second, I want to add a text. So we'll use sklearn pipeline. ठीक है, we'll use it. We'll see how do we use it. तुम इसको और सब मेथड्स के लिए भी यूज कर सकते हो. जैसे अगर तुमको याद हो शशांक, मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन तुमको दिखाया था कि हाउ डू वी एक्चुअली यूज रैंडम फॉरेस्ट इन लूप्स. कि पहले हम ये स्टेप करेंगे, एक लूप मैंने दिखाया था, एक डिक्शनरी, एक लिस्ट बनाया था मैंने, तो वो मैंने बिना sklearn के पाइपलाइन के थ्रू किया था. नाउ यू कैन एक्चुअली यूज sklearn pipeline for it. So first thing we have to import this thing sklearn.pipeline. ठीक है, and then what do you do after it? तुम इस पाइपलाइन में डिसाइड करते हो कि what all the different things you want to do. पहले क्या करना चाहते हो, दूसरी बार क्या करना चाहते हो. कोई और एग्जांपल है यहाँ पे? चलो नहीं है, कोई बात. You have these different classes. सी यू हैव, देखो इसमें कुछ डिसीजन फंक्शंस होता है जो हम पास करेंगे अभी, जो बेसिकली क्या होगा कि जो डेटा हम इनपुट लेंगे उसमें जो पर्टिकुलर डिसीजन फंक्शन जो भी हम यहाँ पे देखेंगे वो यूज हो जाएगा. ठीक है, समझ में आया थोड़ा थोड़ा कि हम क्या करना चाहते हैं. हम देखो हम बस ये करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे इसने पहले एसवीसी यूज किया, स्टैंडर्ड स्केलर, अगर तुमको याद हो, यूज क्लासिफिकेशन मेजर्स. So पहले इसने स्केलर क्लास बनाया. If you want to use scalar, we'll import this svc. If we have to use standard scalar, we'll use svc, something like this. ठीक है, अभी अब यहाँ आते हैं, देखते हैं, तब तो तुमको ज्यादा क्लियर होगा. So I can say something as, let us say my CLF is, first I have to use this keyword pipeline. Obviously I have to use this keyword pipeline. Let's see here, I have to use this keyword pipeline, and then you have to pass all this different things. ठीक है, मैं इसको भी कॉपी करता हूँ, I'll pass it here. ठीक है, ये आ गया सबका. I don't want these things. अच्छा ऐसा करता है, अभी सब इसको रिमूव कर देते हैं. So the पहले देखो, सबसे पहला स्टेप क्या था? The very first step was you were using this vectorizer. You were using, कहाँ गया हमारा vectorizer? You were using this vectorizer. ठीक है, बिकॉज इसके बाद ही तुम्हारा डेटा जो है वो एक डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हुआ. तो ठीक है, मैं ऐसा करता हूं, इफ आई यूज दिस कीवर्ड वेक्टराइजर, I want this function, this decision functions, this is my decision function, count vectorizer, ये कॉल हो जाए. ठीक है, एंड व्हेन अब इसके बाद देखो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, दिस वाज दिस यूजिंग मल्टीनोमियल naive bias. This was the next step involved. ठीक है, this was the next step involved. This becomes my next decision function. Control C. अभी मैं कीवर्ड, लेट्स से I have this keyword NB. ये कीवर्ड तुम अपने से डाल सकते, कोई इशू नहीं है. I have this decision function. This is my class. If I use this class, I will call this decision function. If I'll use this class, I'll use this decision function. Now let's see what happens. Now अब हमारा मॉडल रेडी है. Now we'll use this same thing, model.fit. अब हम we'll use this. Let me run this. क्या दिक्कत आया? Oh, it should be in bracket. These are independent class, so this should be in bracket. Put it in bracket. Let me put a comma here.
ठीक है, let's run this. So now you have actually built your pipeline. Now let's do what? Let's fit our model. तो अच्छा हमने CLF यूज किया ना, चलो कोई बात नहीं, CLF dot fit and let's fit our test data this time. Let's test data. So देखो इसने एक पाइपलाइन बना दी है जिसमें सबसे पहले इट हैज कॉल्ड दिस काउंट वेक्टर फंक्शन, वहां से इसको टोकन्स मिल गए and that token has been passed in this multinomial naive Bayes function and we have actually built our model. So let's head back and let's do it for our emails. I'll use this email only. ठीक है, मैं ये email ही use करूंगा. Let me run it once again. So what I'll say, clf dot predict it for my email. ऐसे नहीं था ऊपर, नहीं हाँ ठीक है. Let's predict what do we get for our emails. 0 for your first text, 1 for your other text. आ गया सबका? आया? नंदिनी आया? तुमने इसने पर एक चार्ट बना दिया कि what are the different steps which are involved in your pipeline. So first is your count vectorizer, which gives you this. Then next comes your multinomial naive Bayes, and now it's done. So let us find out the score. भैया कि तुमने क्या स्कोर है तुम्हारा. Let us see clf dot score. Let us see क्या आता है स्कोर हमारा. और स्कोर हम देखना चाहते हैं अपना टेस्टिंग वैल्यू पे, तो हमने वही पास किया 99%. If you could see, let me multiply it by 100. 99.6%, यानी 99.5 से भी ज्यादा है. And you have this 98%, 98.295. Pretty high, right? Pretty high. So I guess आज का सेशन क्लियर हुआ. How do we actually build an email classifier from a scratch, which will give us a very high accuracy of 99% using something interesting which is known as pipeline. Right. This was something new for all of us. तो भैया ये पाइपलाइन ने ऐसा क्या किया कि एक्यूरेसी बढ़ गई, क्योंकि इसने तो सिर्फ फंक्शन ही कॉल किया ना. तुम्हारा डेटा फिर से ट्रेन हो गया ना, तो पहले ट्रेन हो चुका था, उसके ऊपर फिर से ट्रेन हो गया. फिर से ट्रेन. और दूसरी चीज ये हुआ कि जब हम डेटा ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है, देयर आर सम लॉसेस जो हमारा कंटेक्स्ट हमारा लॉस होता है. पाइपलाइनिंग उस काम को इजी कर देता है. जब हम मैनुअली स्टेप बाय स्टेप करते हैं, व्हेन वी आर डीलिंग विद पाइपलाइनिंग, दिस एक्चुअली डू व्हाट इट, अगर एक वर्ड मेरे को यूज करना होगा तो इट स्ट्रीमलाइंस योर प्रोसेस. एक वर्ड स्ट्रीम्स लाइन योर प्रोसेस. जब प्रोसेस तुम्हारा, जैसे ऐसे समझो ताबिश कि समथिंग लाइक जैसे हम लोग अपने क्लब में करते हैं कि अगर मैं तुमको एक सिस्टमेटिक डिजाइन में बता दूं कि अगर मैं अपना अगर मैंने अपना ये बना दिया, क्या बोलते हैं, पोस्टर बना दिया, देन आई विल पास इट टू नंदिनी, शी विल राइट द राइट अप, देन नंदिनी विल पास इट टू ताबिश, देन ताबिश विल सर्कुलेट इट इन ऑल द ग्रुप्स. तो चांसेस आर कि उसमें तुम्हारा जो कंटेक्स्ट बीच में लॉस हो रहा है, दैट इज इंडिपेंडेंट. वो नहीं होगा क्योंकि नंदिनी को पता है कि उसको क्या करना है, ताबिश को पता है उसको क्या करना है, मेरे को पता है मेरे को क्या करना है. और हमने एक सीक्वेंस बना दिया कि पहले मैं पोस्टर बना दूंगा, then this poster will go to Nandini, she'll extract the context from there, she'll actually give me the write-up, then this write-up would be sent to Tabish, this Tabish will read it, देखेगा किसके लिए, अगर वो एग्रीकल्चर का राइटअप है तो एग्रीकल्चर वाले डिपार्टमेंट में शेयर करेगा, कंप्यूटर साइंस का है तो सीएससी में शेयर करेगा, कॉमर्स का है तो कॉमर्स में शेयर करेगा, समथिंग लाइक दैट, राइट. अब अगर यही एक किसी तीसरे पर्सन को उठा के लाऊं कि मेरे से वो पोस्टर लेगा, वो नंदिनी को भेजेगा, फिर नंदिनी जो दे देगी पास राइटअप, उसको वो ले जाके फिर ताबिश को देगा, फिर ताबिश बोलेगा कि उस सेक्शन में दे के आओ, फिर वो बंदा उस सेक्शन में उसको लेके ले जाएगा. तो ये सब प्रोसेस में देयर इज अ वेरी हाई चांस कुछ तुम्हारा कंटेक्स्ट लॉस हो जाए. और वंस योर कंटेक्स्ट इज लॉस्ट, योर प्रोबेबिलिटी गोज डाउन.
राइट। ठीक है, जैसे पेपर लीक का तुम लोग देखते हो, जहां थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाए, देयर इज सम काइंड ऑफ लीकेज। लेकिन अगर ऊपर से चैनलाइज कर दिया, अपना वर्कफ्लो को चैनलाइज हमने कर दिया, देन दिस प्रोसेस इज एलिमिनेटेड। जो हमारा जो भी थोड़ा थोड़ा सा लॉस, समथिंग लाइक जो हमारा लॉस हो रहा था, वो एलिमिनेट हो जाएगा। सो थोड़ा क्लियर हुआ व्हाई डू वी यूज इट? परफेक्ट। सो शुड वी वाइंड अप आज का सेशन? आई गेस अच्छा लगा होगा। एक नया प्रोजेक्ट तुमने स्क्रैच किया, इसको अच्छे से एकदम प्रिपेयर करो। ऐड some kind of visualization, matplotlib को यूज करके predict versus your actual truth value, make some kind of heat maps and put it in your LinkedIn कि तुमने पहला प्रोजेक्ट बनाया है। LinkedIn में जाओगे, एक सेक्शन होता है प्रोजेक्ट का। मैं अभी GitHub का सेशन लूंगा, शायद हमारा 7th वीक में होगा GitHub का। अगर तुम्हारा GitHub ऑलरेडी बना हुआ है तो पोस्ट दैट प्रोजेक्ट देयर और LinkedIn में पोस्ट करो, मेरे को टैग करो। नंदिनी, ताबिश, श्रेया, शशांक। शशांक देखो मैंने क्या बोला, तुम्हारा लिंक्डइन आईडी है राइट? तुम क्या करो, मैंने जो अभी ये प्रोसेस बताया है, यूज द सेम प्रोसेस, ऊपर का सारा इरेज कर दो, पाइपलाइनिंग के साथ वर्क करो। अब जब पाइपलाइनिंग के साथ तुम वर्क कर लोगे, बिल्ड सम काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन कि तुमने कुछ चार्ट बनाया इस पे या हीट मैप बनाया, जैसे मैंने तुमको बताया था रैंडम फॉरेस्ट में। वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है देखने में। बिल्ड दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच, हेड ओवर टू लिंक्डइन, पहले अपना प्रोजेक्ट को गिटहब पे होस्ट कर दो। ठीक है, मैं अगर नहीं होता तो मैं एक 7th वीक में एक सेशन लूंगा गिटहब को कैसे वर्क करता है। बट उससे पहले मैं चाहता था कि साले जो भी तुम्हारा पहले का प्रोसेस जो इन्वॉल्व है मशीन लर्निंग सीखने के लिए, वो कर लो। तो अगर तुम्हारा गिटहब बना हुआ है, वेरी गुड, गो टू गिटहब, बिल्ड दिस प्रोजेक्ट, पोस्ट इट देयर एंड पोस्ट योर प्रोजेक्ट इन योर लिंक्डइन। तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा मेरे अंडर। then we have this minor project and a major project, 2 प्रोजेक्ट और करेंगे हम। ठीक है, इस पूरे 8 वीक में we'll have 3 प्रोजेक्ट्स। ऐसे तो मैं बीच बीच में तुमको थोड़ा प्रोजेक्ट भी दिया, आई गेस वो तुम लोग कर रहे होगे, आई अज्यूम। अगर करोगे तो तुम्हारा ही फायदा यार, मेरा क्या है। यू कैन एक्चुअली पोस्ट इट देयर कि तुम्हारा लिंक्डइन का जो प्रोजेक्ट सेक्शन है वो खाली नहीं रहेगा। यू मैं एक्चुअली पोस्ट इट। टिल देन अगर कोई इशू, गिव मी अप इन दी चैट सेक्शन। और ताबिश आई गेस वो वाला क्वेरी क्लियर हो गया होगा तुम्हारा, क्यों मैंने वो फंक्शन यूज किया था सम अप करने के लिए। परफेक्ट, चलो फिर लेट्स वाइंड अप आज का सेशन। कल मैं पॉसिबल नहीं है कल कोई सेशन लेना, परसों आई विल हैव अ सेशन ऑन KNN, K nearest neighbor, then we'll have our next week 5 कोर्स। ऐसे करते करते वीक 8 हो जाएगा और तुम्हारा काफी अच्छा सॉलिड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा मशीन लर्निंग। चलो फिर, थैंक यू। परफेक्ट, so let us meet in next session with next topic. Till then, good night.